हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? Why are we discussing? What is the relevance of this? Yes. Can somebody give me a brief on it? What is the relevance of it? Yes. Anybody apart from Huda now? Yes. Okay. सर Huda will come. आई रिक्वेस्ट कि आप या तो सर कैमरा ऑन कर लीजिए, आप पीपीटी शेयर कर दीजिए, बिकॉज वी हैव टू रिकॉर्ड दिस क्लास ना, तो देयर इज समथिंग टू मतलब शो. हाँ मतलब I'll share it. अभी तो I'm just having a revision, sir. अभी I'm just having a revision of the last class. If you want, I can share the screen. No problem out there. Yes sir, that will be good sir, please share something. हाँ हाँ, I've shared it. Share it. Don't worry. Yeah. Yes. I hope it is visible now. Yes sir. Yes, sir. Thank you. Yes. हाँ, please. Yes. So what was the concept? Why was it relevant? क्यों relevant है? Credit risk क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में? Anybody? Abhishek, would you like to answer? Abhishek or Ronak, Kunika, anybody? Okay. Huda, do you want to go ahead? सर जब हम कमर्शियल लेवल पे बात करते हैं, व्हेन एन एंटिटी इज लेंडिंग आउट मनी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उनके लिए क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज there might be a situation where nobody that they have lended out the money to is ready to return it or is in a position to return their money, and then it can result in the failure of the entity that has lended out the money in the first place. It could be a bank, it could be a non-banking financial institution. जो भी borrowing और lending का business करते हैं, उनके लिए it is very crucial to have a very good understanding of the credit risk that they are falling into by lending out any Can you amount. give me an example to help me understand a little more better? What would be the example of it? This is something that we have already discussed in the last class. सर क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं. क्रेडिट कार्ड्स में बहुत छोटे अमाउंट की क्रेडिट लाइन होती है, बट वो काफी ज्यादा लोगों के पास होती है. तो अगर मतलब एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है किसी, अगर कोई भी बैंक एक भी क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है, तो वो क्रेडिट कार्ड अगर 100 या 1000 लोग ले रहे हैं, तो बैंक एक बार में बहुत बड़ा एक्सपोजर ले लेता है बाय गिविंग आउट अ क्रेडिट कार्ड to a number of people. So Right. the people that the bank is giving out the credit card to, bank needs to be very firm on the concept ki how are these borrowers performing on the other loans that they have, or how have they performed in the past loans that they have had. तो ये सब कुछ एनालाइज करके ही वो किसी को क्रेडिट कार्ड आगे एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, मेक सेंस. सी अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी नॉर्मल सेंस कि आप एक छोटी सी एंटिटी हैं. लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एक्स. यू आर एन एक्स एंटिटी और आप लेट्स से कुछ लोन देते हैं बाहर. ठीक है, अब लेट्स से कि आपने बाहर 50 करोड़ रुपए का लोन दे दिया. दैट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट और अ वेरी हम्बल अमाउंट दैट आई एम टेकिंग फॉर एन एग्जांपल. अब आपने 50 करोड़ का लोन दे दिया और आप अब अज्यूम कर रहे हो कि 50 करोड़ रुपए का मैं लोन दे रहा हूँ, इस पे मैं कुछ इंटरेस्ट अर्न करूंगा. ठीक है, and where does this money come from? This money comes from your depositors. जो depositors पैसा लेके गए. अब 50 करोड़ रुपए का आपने लोन दिया, लेट्स से इसमें से 20 करोड़ रुपए का लोन वापस आ जाता है, and an amount of 30 crore rupees is not getting returned. 30 करोड़ रुपए का जो आपका पैसा है, जो वो आपको रिटर्न में नहीं मिलता. ठीक है, what is gonna happen? They're going to be depositors. ठीक है, वो are going to claim their money back. 30 करोड़ रुपए के depositors होंगे जो अपना पैसा वापस मांगेंगे. ठीक है, now you also have to think it on those lines कि पहली बात तो अगर कोई इंसान अपना लोन वापस नहीं कर पा रहा है, there is also a high probability that he might also not be giving his interest. भाई कोई जरूरी तो नहीं कि इंटरेस्ट दे रहा, he might also not be giving the interest, तो इंटरेस्ट का भी नुकसान हो गया. प्लस डिपॉजिटर्स जब पैसा डिपॉजिट करते हैं, they also get an interest that we call it as interest on saving कह लो आप, या interest on current account कह लो. They're also going to get some kind of interest. So ultimately bank will not have any kind of money to repay it back to the depositors. And अगर उसके पास funds नहीं हुए, sufficient funds, they're going to turn out to be insolvent. You will have to talk about the aspect of insolvency. आप सिर्फ लॉस के बारे में नहीं बात कर सकते हो. You will have to take it a level ahead and you will also have to talk about insolvency. क्योंकि लॉस
शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, एक फॉर द पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए हो रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि बिजनेसेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे लॉस होते रहते हैं, दैट्स कंप्लीटली ओके। बट ऐसा नहीं होना चाहिए दैट इट माइट टर्न इनटू व्हाट यू कॉल इट एज, इट माइट टर्न इनटू इंसॉल्वेंसी। So after the loss part, you will also have to take it forward and you will have to talk about insolvency part. ठीक है? Is it clear? Both the dimensions are clear? Class, you can give me a thumbs up by letting me know. और कोई मीडियम नहीं है मेरे पास, तो अगर आप thumbs up दे दोगे, it will be good to know that you are following. Yes, others please. ठीक है? Let's move forward now. I'll straight away take you to the topic now. Now, I believe it's all clear. You can see the screen. Can you please confirm once again? We are on the measurement of credit risk, and this is a very important topic for Yes, your sir. exam point of view. Make a note of it. Very very important topic. अब हम तब से क्रेडिट रिस्क की कहानी गा रहे हैं, ठीक है? नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ आर यू गोइंग टू मेजर इट। मेजरमेंट क्या होने वाला है क्रेडिट रिस्क का? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वन ऑफ द मेथड्स इज नोन एज क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स। मॉडल्स बनाने का क्या मतलब होता है? दैट you use some kind of statistical technique, you use some kind of mathematical technique to create some kind of model। ठीक है? वो मॉडल्स को हम कहते हैं कि भाई हाँ आप ये मॉडल बना के दे दो, एंड बेस्ड ऑन दैट मॉडल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द क्रेडिट स्कोरिंग। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ, आई होप यू आर एबल टू सी इट। ठीक है? If I ask you, I have discussed this in the class also. Let's say if I have to determine somebody's, let's say, credit score, मुझे आपका credit score determine करना है. What are going to be some of the factors? Can you name some factors out there? Yes, class, please. Name some factors that Sir, comes to your mind. demographic factors like age, location, Okay. geographic location. So age can be one Um, factor. What else? Credit history, the kind Okay. of credit history Wonderful. that the has maintained. उनका कितना Okay. income है, income, Okay. net Wonderful. income, if ठीक है. it is determinable, otherwise gross income, और PDI ले लेते हैं, personal disposable income ले लेते हैं. हाँ हाँ हाँ, What else? disposable income. What else could be? Dependent कितने हैं उनके income के ऊपर, how many people are depending on that income. ठीक है, not a very significant measure, but ठीक है, उसको छोड़ देते हैं और think about something else. All right. The kind of job that that person is doing, is he a retired person or is he in a job? Um, and what is the stability that that job is offering? अगर हाँ, so उसका कुछ basically type of measurable, job, it can be a government job or a private job. ठीक है? okay. That's something that we also discussed in the last class. Yes, what else? That's all. One aspect could be previous loan. Are you already having a loan or not? Sir, वो credit history में cover नहीं होगा? Credit history is about आपकी रिटर्न की एक्टिविटी स्टेटस क्या रहा है, ठीक है? हाँ. हिस्ट्री एज इन आप कैसा परफॉर्म करते थे, वेदर यू वर रिटर्निंग द मनी बैक एंड नॉट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। प्रीवियस लोन मींस कि अभी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लोन है। Okay. Okay, that is how we are differentiating. So Your let's say as of spending now what I habits, have done. Hello? your spending habits, that would be part of credit score. Yeah, of course. That can also be there. Your spending habit, or what you can say, some people also call it as lifestyle. Now, if I have to tell it very clearly, I do not know how many of you understand statistics well. How many of you understand basic statistics like correlation, regression? Anyone? Sir, we do understand that. Then can somebody elaborate the difference between correlation and regression? Very basic question. Correlation Yes. and regression. Yes, Okay. not Huda. So Not Huda, please. regression. Okay, all right, not that. Yeah, somebody else. Correlation and regression. Atulji, would you like to? Or anybody, the difference between correlation and regression? Very simple. Because it's important for us to understand this model, the model that I'm putting it in front. Yes, Mansi, please. Yeah, in correlation, it is mainly the relationship between the two variables, and in regression, we measure them in numerical form, like how much, what is the, like how much they are related with each other. Now, how are they different then? Yes.
So like they are different in a way, like that just determines the relationship. In correlation, it just determines the relationship, whether there is a positive relationship between the two variables or they are perfectly correlated, negatively correlated. Whereas regression shows in numerical terms, like what is the quantum of the, like what is the quantum of both the relationship between the both the variables. Quantum can be known by, can be identified with the correlation. Also, you get values out there, 0.8, 0.7. Those are giving you the quantum of relation, isn't it? But regression, if I go by graphical representation, so in regression we get a line which depicts that. I am unable to do No, that so very. See, you are trying to put in a line. regression would be That's your altogether different method. actual, right? Yeah, Regression yeah, would be Tulji. your actual relation, right? I mean, how the two variables are, are related to each other. Correlation would be more, in terms of association as to whether they both move in the same direction or opposite No, direction. that is They may not be basically the exact type. relationship. That is a type. And what did you say about regression, Atulji? I'm saying it's more, it actually gives you a functional relationship. Partially. Okay, so I'll put it very simply. Bhavna, would you like to add something? हाँ, रिग्रेशन में एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और अदर इंडिपेंडेंट होता है, बट कोरिलेशन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं होता, दोनों का बस ठीक है, very डायरेक्शन. close. Yeah, now you're a little more close. Yes. Okay, so Yeah, let's we can understand. also Yeah, Mansi, please. that by change in one variable, how much there is a change in other variable. Like it just shows that kind of relationship also. But But from why correlation, are you able to measure it? Because now that creates the main difference. Why okay. are you able to say that one is a dependent and one is an independent, or why are you able to say that what is the quantum of impact one is causing on the other? Because in case of correlation, it's not necessary that there exists a cause and effect relationship. Now, this is a keyword that I'm giving it to you. In case of correlation, it's not necessary that there will be a cause and effect relationship. But in order to have regression analysis, there has to be a causal effect, or what you say, cause and effect relationship between the one variable and the other. For example, if today I take data of, let's say, one is your scores, that means one is your marks, and on the other I take the data of, let's say, number of times it has rained in a particular month. Let's say 3 महीने आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद आपके मार्क्स आ गए, कुछ मार्क्स आपके ले लेते हैं, ठीक है. And on the other side, let's say we have number of times it has been raining, ठीक है. उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करें तो क्या निकलेगा? It is going to give us correlation. There can be a high degree of correlation, there can be a low degree of correlation, there can be a positive correlation, there can be a negative correlation. It can be anything. But can you say, now this is a question that I'm asking, can you say theoretically that there is any causal relationship between the number of rains and the marks that you have scored in your examination? Can you say that? Yes. Anyone, can we say this? Is there any causal relationship between them? Any bleak relation that you can think of? Any logical relation that you can think of? Anyone? So what are the two variables, marks and? Number of time it has been raining. No, sir. So Nothing when you're direct. taking out correlation, yes. So when you're taking out correlation, you can pick up any two random variable and you can find a relationship between them. It is going to tell you the degree and direction. There are two terms which are used with correlation: degree and direction. Abhishek, you're trying to say something. Please go ahead. Okay, that's okay. So degree and direction are the two terms which are related with correlation. But when you talk about regression, the moment you leave correlation and you move a stage ahead, that is in terms of regression, you would say that every variable that you're talking about is going to have a cause and effect relationship. So effect part is going to be taken care by the dependent variable, okay? And cause is going to be taken care by your independent variable. For example, if we take the case of law of demand, okay? If I take the case of law of demand, quantity demanded is going to become one variable and price is going to become one variable. Now there's a question out there. Mansi, can you tell me which of these is going to be an independent and which is going to be the dependent?
Mansi? Out of price and quantity demanded, which of these is going to be dependent and which of these is going to be your independent variable? The supply will be I'm not talking about supply. Quantity demanded and price. That's it. okay, quantity demanded and supply. And quantity demanded will be independent and price will be dependent. Are you sure on this, Mansi? Because it can be vice versa also, because sometimes it's that is also the case because demand You talk. changes. You talk in a very general terms. Do not go towards the exception. Just be on a very normal footing. Normal footing means law of demand. Okay, if price increases, then demand decreases. So I would say that here the price will be your independent variable and the quantity demanded will be your dependent variable. Yes. So that is a normal relationship that gets established, that your quantity Yeah. demanded is going to be your dependent variable and price is going to be your independent variable. Yeah. Now, this relationship is not a correlational based relationship. This is a regression based relationship. Why? Because you can measure here, as somebody just said, you can measure here that with an increase in price, how much is going to be the change in the quantity demanded. And you give a terminology to it also. Can you name that terminology? What do we say? If I calculate the impact of change in price to the change of quantity demanded, we have a economics terminology also. Yes, economics, very basic. क्या कहते हैं इस term को? What do we say to this term? Anybody? Bhavna, Mansi, Huda, Atulji, anybody? And quantity demand function maybe. Elasticity, dear. Elasticity. Elasticity is going to tell you the responsiveness change in quantity demanded with the change in price. So ideally speaking, that the model that we are creating here in front of you is a regression based model. Why? Because I'm trying to measure that with a change in age, how the credit score is going to be impacted, with the aspect of credit history, how is it going to impact it, so on and so forth. So what does a कंपनी डज, एक कंपनी क्या करती है इन सारे फैक्टर्स को लेकर, अभी हमने सिर्फ हाइपोथेटिकली 4-5-6 फैक्टर्स ले लिए, दे विल हैव अ प्लेथोरा ऑफ फैक्टर्स वेयर दे विल बी valuing all of these things. So what they're going to do, they're going to assign some weights to each of these factors. हर इन फैक्टर्स को कुछ कुछ weights assign कर दिए, they're going to assign some kind of weights to each of them, and based on that they're going to calculate कि अगर कोई इंसान को मैं लोन दे रहा हूँ, if I'm giving some loan to somebody, what is going to be the impact on credit score और कितना credit score निकल के आएगा. इसके लिए एक बहुत कॉमन कंपनी है, फेयर इसाक कंपनी है, which is a foreign company, ठीक है, that give some kind of score. So अलग अलग scores है, अलग अलग methodology यूज होती है, but the broad idea is कि credit score आप निकाल सकते हैं किसी इंसान का, और उसके बेसिस पे आप आइडिया दे सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने सिबिल स्कोर के बारे में सुना होगा. आई एम वेरी श्योर अबाउट सिबिल स्कोर के बारे में कितने लोगों ने सुना है? यस, सिबिल स्कोर. Yes, I can see a lot of response. Yes, so can somebody tell me in the comment section, एक अच्छा सिबिल स्कोर क्या होता है? If you can give me a value range, above what value you say that the सिबिल score is good enough? 800. Good enough. 800 plus is considered to be a very good सिबिल score to give a loan. मतलब 790 800 के आसपास जैसे आपका सिबिल स्कोर है, ठीक है, you will get the loan very easily provided other things are good in place. So एक एस्पेक्ट क्या हो गया आपका क्रेडिट रिस्क मेजर करने का कि मैं आपका क्रेडिट स्कोर देख लूं. अब यहाँ पे हमें एक इंटरप्रिटेशन भी देनी पड़ेगी when you are writing an answer. So for example, if you say, let's take the same example which Atul ji just mentioned, that अगर हम कहते हैं कि 800 plus is the CIBIL score of an individual, what are you going to interpret in terms of the credit risk? Credit risk क्या होगा इस इंसान का? Yes. What is going to be the credit risk? Is it going to be high? Is it going to be low? It is going to be low, sir. Low. Yeah, it's going to be low. So what I'm trying to tell you here is कि जब आप methods के बारे में बात करोगे, if the question comes up that okay, narrate about the various methods of measuring credit risk, first talk about the model, explain the model, and then do take an example to give the interpretation. अगर आप interpretation नहीं देते हो या एक example नहीं देते हो, you're going to lose marks. Okay, so one of the methods, one of the models is to talk about credit scoring model. ठीक है. Second model is about probability of default model. Now आप क्या करते हो, हर चीज में आप एक probability निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है, एक probability निकालने की कोशिश करते हो कि whether this thing is going to happen or not.
इसी तरीके से हर बैंक के पास, हर इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि जब वो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, वो भी एक मॉडल बनाते होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बनाते होंगे कि कितने चांसेस हैं कि हमें इंश्योरेंस देना पड़ जाए, ठीक है, और बेसिकली सामने वाले की डेथ हो जाएगी अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या फैक्टर्स हैं, उसके बेस पे दे ट्राई टू डिटरमाइन। ऑफ कोर्स कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स होंगे, कुछ आपका पेरेंट्स की वो डिटेल्स के बारे में पूछेंगे कि पेरेंट्स को बीमारी तो नहीं थी, ठीक है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपके मेडिकल टेस्ट कराएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो सिमिलरली व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेजर क्रेडिट रिस्क, वन ऑफ द मॉडल्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मॉडल, जहां पे हम कुछ फैक्टर्स करके, कुछ एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करके ये निकालने की कोशिश करते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू डिफॉल्ट इन अ पर्टिकुलर लोन। फॉर एग्जांपल, लेट्स से 50 करोड़ रुपए का एग्जांपल लें, 50 करोड़ रुपए का लोन लिया और लेट्स से एक कंपनी पास्ट डेटा एनालाइज करती है, ठीक है, पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज किया सकता है, उसके बेसिस पे एक आउटकम दिया जाता है दैट देयर इज अ 20% प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, 20% की प्रोबेबिलिटी है डिफॉल्ट होने की, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब हम वैल्यू एट रिस्क पढ़ रहे थे, एक टॉपिक पढ़ा था हमने, तो वहां पे हम क्या करते थे, हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन लेते थे और हम वैल्यू निकालते थे कि कितनी वैल्यू एट रिस्क पे है 50 करोड़ रुपए से। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है दैट देयर कैन बी अ डिफॉल्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, बैंक्स यूज प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट मॉडल टू असेस द क्रेडिट रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट बोरोवर्स व्हेन इशूइंग लोन्स और एक्सटेंडिंग क्रेडिट लाइंस। तो जब कोई बैंक किसी कॉर्पोरेट बोरोवर को लोन दे रहा होता है या किसी इंडिविजुअल बोरोवर को लोन दे रहा होता है, what it tries to do, it tries to compute a probability based default model कि भाई कितने probability chances हैं। Now what factors it is going to take into place, that is going to vary from bank to bank, what weightage it is going to give is going to vary from bank to bank, but broadly हम क्या कैलकुलेट करके आ रहे हैं, probability। So in some form or the other अगर मैं आपको बोलूं तो ऊपर जैसा एक मॉडल बनेगा, बस ऊपर के केस में क्या हो रहा था, आपको क्रेडिट स्कोर निकल के आ जा रहा था, यहाँ पे what is going to happen, you're going to get a probability default value, it can be 20%, can be 30%, can be anything, ठीक है। So that is another way of measuring the credit risk. Third important aspect है, ठीक है, which is your credit rating agencies। अब credit rating agencies क्या होती है, कौन बताएगा? Who is going to tell me what are credit rating agencies? Yes. Yes class, credit rating agencies हमेशा न्यूज में रहती हैं, बेसिक फाइनेंस है ये तो। सर Yes, जो please. क्रेडिट मेजर करने वाली एजेंसीज होती हैं, जो क्रेडिट वर्थनेस में मेजर करती हैं, उन्हीं को ठीक कहते है। हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। वो रेटिंग देती हैं कि कौन सा सही है, कौन सा रेट गलत है। जैसे रेटिंग में वो देती हैं ए बी 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 ऐसे करके रेटिंग देती हैं। ठीक है, ठीक है, अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे क्रेडिट रेटिंग को, डोंट वरी। ब्रॉडली क्या मतलब होता है इसका, पर्पस क्या है उसका, वो समझ लेते हैं थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी हो। अब सबसे पहले तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज नॉट रेटिंग द इंस्टीट्यूशन, दे आर रेटिंग द प्रोडक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस है। जब भी कोई कंपनी कोई नया इंस्ट्रूमेंट मार्केट में लेके आता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब सिक्योरिटी हो गया, अब वो डेट मार्केट के अंदर इशू कर सकता है, ठीक है, वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता है मार्केट में, वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता है, बहुत सारी चीजें मार्केट में इशू कर सकता है। हर प्रोडक्ट, हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से अलग हो। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो तो आप चाहते हो कि लोग उसको सब्सक्राइब करें। अगर इक्विटी शेयर्स है तो उसको लोग सब्सक्राइब करें, खरीदें, प्रेफरेंस शेयर है तो उसको लोग खरीदें, अगर कोई डेट इशू कर रहा है, लोन इशू कर रहा है, तो लोग आए और लोग उसको खरीदें पर्पसफुली। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई नई कंपनी है या जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट निकल के आ रहा है, you would want some certainty कि यार मेरा पैसा डूबेगा नहीं, if I'm putting some amount of investment। तो आप क्या करते हो, आप एज अ कंपनी, लेट्स से you are X as a company, you go to a credit rating agencies, ठीक है, हमारे भारत में भी काफी सारी credit rating agencies हैं, you go to a credit rating agencies and you tell them कि भाई आप हमारे इंस्ट्रूमेंट को, रिमेंबर इंस्ट्रूमेंट को रेट करो। इंस्ट्रूमेंट मतलब लेट्स से मैं एक डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, एक्स कंपनी है, ये एक डिबेंचर इशू कर रहा है, आप मेरे इंस्ट्रूमेंट को रेट करो और आप बताओ कि मेरा इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा है। अब ऑफ कोर्स से अगर आपको इंस्ट्रूमेंट को रेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के कुछ फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, जिसको एक टर्म दिया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। सुना हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस फाइनेंस के अंदर क्लास? यस सर। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, बताइए, बताइए कृपा शंकर, क्या सर होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड सर लॉस, जब कंपनी कैश के फ्लो बैलेंस स्टेटमेंट शीट और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, तो इसी को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अभिषेक आप भी कुछ कह रहे थे?
श्रेय आप भी कुछ कह रहे थे? श्रेय Sir, I was saying this only. Balance sheet, P&L, cash flow statements, when we analyze all these, so we call it जो बेसिक fundamental फंडामेंटल है analysis. किसी कंपनी के, जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, तो हम उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं. यस हुडा, यू आर आल्सो सेइंग समथिंग. Sir, I remember it like that कि इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी के फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं फंडामेंटल्स में. EIC, economy, how is that individual security performing in economy, in industry, and for that particular company. हाँ, so broadly what we are trying to look into, what are basic fundamentals, वो ऐसे basic elements कौन से हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेट्स से रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट इंडियन मार्केट्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, इंडियन मार्केट्स नीचे जा रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट इज गोना हैपन, सम वन थिंग इज गोइंग डाउन, वन कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल. सो जो भी इंसान आपको लोन देगा या लेट्स से कल को आपके इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालेगा, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस होगा ना कि यार इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कल को अगर इकोनॉमी और नीचे चली गई तो चीजें खरीदेगा कौन भाई. अगर मार्केट में पैसा नहीं है, द इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग, इकोनॉमी इज गोइंग इनटू रिसेशन, पीपल विल नॉट हैव मनी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे. ठीक है, सो देयरफॉर these credit rating agency what do they do, वो कुछ रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं. जैसे याद है आपको स्कूल में क्लीनलीनेस के लिए रेटिंग मिलती थी, हाइजीन के लिए रेटिंग मिलती थी, डिसिप्लिन के लिए रेटिंग मिलती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए रेटिंग मिलती थी. याद है मुझे स्कूल की वो याद है, रिपोर्ट कार्ड के अंदर CA, B+ और ऐसे ऐसे सारी रेटिंग्स मिला करती थी, which used to have some kind of representation कि A+ का मतलब है excellent, A का मतलब है very good, B+ का मतलब है good, B का मतलब है average, so on and so forth. So similarly, बिल्कुल वो बेस्ट एग्जांपल है, एनालॉजी है समझने के लिए. हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, जो भी इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू करके ला रही, चाहे वो डिबेंचर्स हो चाहे कुछ भी हो. यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी मैंने इंक्लूड किए हैं, कुछ फेमस कंपनीज हैं फॉरेन की. ठीक है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स हो गया, मूडी हो गया. ठीक है, ये रेट करती हैं और इन रेटिंग के बेस पे लोग मेजर करते हैं, लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्रेडिट रिस्क कितना है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर किसी की रेटिंग A+ है, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि अगर किसी की रेटिंग A+ है, व्हाट आर यू गोइंग टू से अबाउट इट्स क्रेडिट रिस्क? यस एनीबॉडी? क्रेडिट रिस्क It कम is a होगा ज्यादा होगा? less risky borrower. Yes. So if the A+, if I'm assigning generally A+, मतलब मैं एक हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ कि अगर मैं A+ या इस तरीके की रेटिंग दे रहा हूँ, तो जनरली चांसेस ऐसे हैं कि जो क्रेडिट रिस्क है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लो. एंड साइमल्टेनियसली जैसे जैसे रैंकिंग गिरती जाएगी, A+ से A पे आओगे, B पे आओगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्रेडिट रिस्क है वो बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग. The last model or the last way that we have, or what you can say, one more model, एक और probably model होगा हमारे पास, is stress testing. अब स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में हमने बात करी थी, कौन बताएगा स्ट्रेस टेस्टिंग? We've already discussed stress testing. Yes. Yes क्लास, जल्दी से बताइए स्ट्रेस टेस्टिंग, ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. Sir, stress testing में basically we examine how are we going to perform in worst case scenario. So in this, an example could be, say there is a bank XYZ and it has loaned out an amount of 2 crore rupees. So the bank will analyze कि अगर वो 2 crore का default हो जाता है, तो do we have enough backup with us? Do we have enough investment with us that can steer us out of this worst situation? So how is this related with credit risk? Try making a link out of it. Sir, जब भी कोई क्रेडिट पे कोई भी अमाउंट देगा, तो they can always have backup plans for themselves. In case the borrowers default, they can move to plan B. हाँ, that is one way of saying it. Another way of saying it is कि stress testing करके आपको ये पता चल जाता है कि to tackle those losses, to tackle those credit risks, आपके पास sufficient backup कितना है. So in some form or the other, अगर मेरी stress testing worthy prove होती है, to keep it very simple, कि अगर मैं stress testing करता हूँ बहुत rigorous form में and it turns out कि I have sufficient cushion. कुशन हम कहते हैं ना कि जैसे आप अपने हेड को सपोर्ट करने के लिए कुशन लगाते हो, हर चीज है ना रियल लाइफ से निकल के आ रही है, जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग. आप कुशन का इस्तेमाल करते हो रात को सोने के लिए, क्या करता है वो आपको हेड को सपोर्ट देता है. सिमिलरली अगर आपके स्ट्रेस टेस्टिंग में एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है, सो व्हाट डू यू से that we will be in a better position to tackle or respond to any kind of default or credit risk that is going to arise in future. तो कल को अगर कुछ नुकसान आता है, कल को कुछ रिस्क निकल के आता है, so we'll be able to easily tackle it. अब अगर किसी चीज को मैं आसानी से टैकल कर पाता हूं तो क्या होगा, क्रेडिट रिस्क कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? यस, इज इट गोइंग टू गिव मी अ लेस रिस्क और मोर रिस्क? कम हो जाएगा.
कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर स्ट्रेस टेस्टिंग बेटर परफॉर्म करती है, यस कृपा शंकर, कम हो जाएगा, लेस रिस्की होगा। यस, लेस रिस्की होगा। तो ये चौथा मॉडल हो गया इवैल्यूएट करने का कि हमारे पास कितना क्रेडिट रिस्क है, ठीक है। लास्ट मॉडल है जिसको हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज वैल्यूएट। आई डोंट थिंक सो ये समझाने की जरूरत है। वैल्यूएट रिस्क से आपको पता चल जाएगा कि जितना भी पोर्शन आपका रिस्क पे है, उसमें से जितना भी टोटल अमाउंट आपने लोन दे रखा है, उसमें से कितनी वैल्यू है लोन के फॉर्म में जो रिस्की है, जिसके ऊपर क्रेडिट रिस्क अराइज हो सकता है। वैल्यू एट रिस्क की कैलकुलेशन हमने सेकंड यूनिट में कर ली थी, प्लीज उसको छोड़ के मत जाइएगा। 110% आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में वैल्यू एट रिस्क के ऊपर, ठीक है। इज इट क्लियर? ऑल द 5 मॉडल्स आर क्लियर? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑल द 5 मॉडल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर्स प्लीज गिव मी अ थम्स अप ताकि मुझे पता चलता रहे whether you are able to understand. I can see a lot of students out there. Perfect. Yes, so let's move ahead now. Now I have a very small case to gauge it out. एक example लिया है छोटा सा मैंने, so I would want somebody to read it. कृपा शंकर, would you like to read it? कृपा शंकर यादव, आप पढ़ेंगे केस एक बार? Please go ahead. Suppose a bank wants to assess the credit risk of individual loan applicant for personal loan. The bank collect various information about the applicants, including their credit history, income, employment, stability, and the other relevant factors. Using the data, the bank can employ a credit scoring model to assign a numerical credit score to each applicant. Let's assume the bank use a wide use credit scoring model such a CIBIL score. The CIBIL score range from 300 to 850 with higher score indicating lower credit risk. Based on historical data and statistical analysis, the bank determine specific cutoff point to classify applicants into different risk category. Using the classification. Just stop here. So अभी तक हमने क्या पढ़ा? What did we understood? कि हम एक बैंक के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying to look it from a bank's perspective कि एक बैंक जब किसी को लोन देता है तो बहुत सारे फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस भी किया है, उन फैक्टर्स के बेस पे एक इंसान का क्रेडिट स्कोर निकाल देता है, जिसको हम सिबिल स्कोर कहते हैं, ठीक है। एंड द रेंज ब्रॉडली वेरीज फ्रॉम 300 टू 900 एक्चुअली, ठीक है। 850 कई जगह पे होता है क्योंकि कोई पहुंचता नहीं है वहां तक, बट ब्रॉडली एक ब्रॉड रेंज दी हुई है आपको, ठीक है, जिसके बेसिस पे बैंक डिटरमाइन कर लेता है कि उसको लोन देना चाहिए कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करूं, अगर किसी इंडिविजुअल का स्कोर 800 है, ठीक है, द कंपनी माइट इजीली गिव लोन्स, ठीक है। वेयर एज अगर किसी कंपनी के बारे में बात करें, कॉर्पोरेट के बारे में बात करें, ठीक है, एंड कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, तो ये भी हो सकता है कि द बैंक माइट डिमांड, नाउ इट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड माइट, बिकॉज दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ बैंक ये सोच सकते हैं कि यार ये कंपनी है, ये बड़ा लोन हमसे ले रही है, बड़े स्केल का लोन ले रही है, तो इनका जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो कम से कम 810 होना चाहिए, ठीक है। वेयर एज दे कैन बी अ डिफरेंट बैंक विच माइट थिंक यार कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा है, तो अगर इनका स्कोर 790 है तो भी इनको लोन दे देते हैं। So therefore it is written that the bank is going to determine the cutoff point. Bank cutoff point determine करेगा and accordingly it is going to put applicants in different risk category की कौन सा जो लोग लोन लेने आ रहे हैं, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनको कौन सी कैटेगरी में डालना है। क्या उनको लो रिस्क की कैटेगरी में डालना है, हाई रिस्क की कैटेगरी में डालना है, या फिर मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में डालना है, ठीक है। इज इट क्लियर टिल है? आगे चलते हैं। कृपा शंकर, प्लीज रीड अहेड। Yes, sir. Using the classification, the bank can make more informed decision regarding loan approval, interest rate, and loan term. Low risk borrower may be offered lower interest rate and higher loan amount, while higher borrowers may face higher interest rate or even loan rejection. By employing credit scoring model and categorizing applicants based on their credit score, the bank can measure credit risk in quantitative manner. The credit score provide an indication of the likelihood of default, allowing the bank to manage its loan portfolio and allocation resource more effectively.
ठीक है. अब ये why I have given this example or why I have this taken a case, so that if you are writing an answer tomorrow, let's say you're planning to write an answer tomorrow, you will be in a better position to give a classification. अब आप क्या कर सकते हो, आप समझा सकते हो. For example, जो थोड़े से और smart students होंगे वो क्या करेंगे, they can further go ahead and classify that if somebody is having a, let's say, credit score of around 400, अगर किसी का credit score 400 तक का है, ठीक है, let's say you classify them as low, high credit risk, ठीक है. Somebody who has a score of, let's say, 400 to 700, or let's say 750, you can classify them into moderate. And somebody who has a score of above 750, you can tell them that these are low defaulters, low chances of risk, or what you can say, low risk people. So what you're doing based on credit score model, आप classify करने जा रहे हो, you're trying to classify that okay, these are the 3 categories that can be made, ठीक है. So this will basically help a bank to determine कि किस कैटेगरी के लोगों से कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है और कौन सी कैटेगरी के लोगों से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है. दैट इज वन वे ऑफ गोइंग अहेड विद द कैटेगराइजेशन. तो ये एक एग्जांपल आपको इसलिए दिया गया है पीपीटी के अंदर ताकि यू अंडरस्टैंड एट हाउ टू नरेट एन एग्जांपल, हाउ टू क्रिएट एन एग्जांपल. तो यहां मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया, यू कैन गो अहेड एंड यू कैन क्रिएट मनी मोर एग्जांपल्स लाइक दिस, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज concentration risk. Yes, we have also discussed this briefly. Would somebody like to take a brief moment to elaborate what is a concentration risk? Yes, last class में इसको भी discuss किया था हमने. Yes, concentration risk. What do we mean by concentration risk? Sir, concentration risk arises when a bank or any entity that lends out money, they lend out a very big percentage of their portfolio to the same, either a single client or to a single industry or to a single geographic location. What तो is अगर harm in doing that? ऐसा होता है सर कि अगर कुछ डाउनफॉल हुआ और उस डाउनफॉल की वजह से पूरी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक कंडीशन या पूरी इंडस्ट्री की फाइनेंशियल कंडीशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया, तो उस बैंक का बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिफॉल्ट में आ जाएगा एंड इट विल बी इन द चार्ज ऑफ सेक्शन ऑफ देयर बैलेंस शीट. तो उस वजह से उनके लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे बिल्कुल in that perfect. particular period. That is why concentration is avoided and diversity is promoted. Perfect. So concentration and diversification are just contrary to each other. What you can say, they're just opposite to each other. So concentration risk को खत्म करने के लिए हम diversity के बारे में बात करते हैं कि आपको अलग-अलग डाइवर्सिटी रखनी चाहिए, अलग-अलग लोगों को लोन देना चाहिए, अलग-अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन में लोन देना चाहिए. बेसिकली जब हम डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक भी डिस्कस कर रहे थे तो हमने अलग-अलग डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करी थी. यहाँ पे उसी तरीके के फॉर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है. वन इज ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन. ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, सारा का सारा जो लोन है वो किसी एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में दिया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पैसा लोन दे रहे हो, किसी दूसरी कंट्री को नहीं लोन दे रहे हो. स्टेट वाइज देखें, आप किसी एक स्टेट में ही लोन दे रहे हो. अगर सिटी के बारे में बात करें, किसी एक सिटी में ही लोन दे रहे हो. तो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा लोन दिए जा रहे हैं, विच इज एनहांसिंग योर एक्सपोजर टू रिस्क. ठीक है, ये हो गया ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन. सेकंड एस्पेक्ट क्या हो गया, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन. इंडस्ट्री कंसंट्रेशन क्या मतलब है, आपने जितने भी लोगों को लोन दिया वो सारे के सारे लोग जो थे वो रियल एस्टेट सेक्टर को बिलोंग करते थे या फिर रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगा रहे थे. अब कल को क्या होता है, रियल एस्टेट सेक्टर बर्स्ट हो जाता है, रियल एस्टेट सेक्टर खराब हो जाता है, ठीक है, उसका जो बबल है वो बर्स्ट कर जाता है, कल को प्राइसेस कोलैप्स कर जाते हैं. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जितने भी लोग हैं वो अपना पैसा नहीं दे पाएंगे. इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर आप रिकॉल करो तो इसका एक क्लासिक एग्जांपल ऑलरेडी हमारे पास्ट में हो चुका है. कैन समबडी गिव एन एग्जांपल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यस, कौन से एग्जांपल के बारे में बात कर रहा हूं मैं? दिस इज ऑलरेडी ऑकर्ड इन द पास्ट में, ये ऑलरेडी हुआ है, रियल एस्टेट का बबल. Yes. Can you think of any crisis of such? Sir, वो 2008 वाला crisis. Yes. Mortgage backed securities वाला. Yes. GFC global financial lending. crisis. Yes, subprime lending. वो जो GFC crisis हुआ था, that has basically occurred because of industry concentration only, और उस concentration का नाम है real estate concentration. ठीक है. The third aspect is borrower concentration. Borrower concentration का क्या मतलब होता है कि आपने जिन लोगों को लोन दिया हुआ है या जिन लोगों ने आपसे लोन बोरो किया है वो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ले लिया है.
इससे क्या मतलब है, लेट से मुकेश अंबानी जी आए, मुकेश अंबानी जी ने कहा कि ठीक है तुमने टोटल कितना लोन देना है, एसबीआई बैंक ने कहा कि मुझे 500 करोड़ रुपए लोन देना है, मुकेश अंबानी जी कहते हैं मुझे 400 करोड़ रुपए का लोन दे दो, मतलब टोटल आउट ऑफ 500 करोड़ जो एसबीआई लोन दे रहा है उसमें से 400 करोड़ जो है वो मुकेश अंबानी जी ले लेते हैं। तो क्या होता है भाई, वैसे तो चांसेस फिलहाल नहीं है, लेकिन लेट्स से कल को गॉड फॉरबिड इफ समथिंग डजंट वर्क इट आउट एंड ही बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो क्या होगा, एसबीआई बैंक भी बंद हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट borrower concentration is all about. Now the fourth one is sometimes conflicting to students, कई बार नहीं समझ में आता तो उसको ध्यान समझ लीजिएगा। counterparty concentration is all about when a substantial portion of loan is availed by few individual borrowers or entities. इसका क्या मतलब है, यहाँ पे काउंटर पार्टी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब लेट से कि बैंक थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, बैंक लोन अवेल कर रहा है, ठीक है भाई, बैंक भी तो डिपॉजिट्स लेता है ना, टॉकिंग अबाउट डिपॉजिट्स, बैंक के लोन क्या हो गए, बैंक के लोन होगा डिपॉजिट्स। नाउ लेट्स से बैंक लोन ले रहा है, ठीक है, और बैंक ने लोन क्या ले रखा है, बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आ रखे हैं वो कुछ ही लोगों से आ रखे हैं, ठीक है ना, इट हैज कम अप विद ओनली फ्यू पीपल, ठीक है। तो कल को क्या होगा कि अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, काउंटर पार्टी वाला एक बैंक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स से एक एसबीआई बैंक है और उसके पास 5 लोगों ने ये पैसे आके जमा किए हुए हैं, एक लेट्स से अतुल जी आ गए, एक हुडा आ गई है, एक अभिषेक आ गया, एक भावना आ गई, एक कृपा शंकर आ गए, 5 लोग आ गए और 5 लोगों ने क्या किया, 10 करोड़ रुपए जमा कर दिए, ठीक है। बैंक के पास कितने का डिपॉजिट हो गया, 50 करोड़ रुपए का डिपॉजिट हो गया और 5 लोगों में से आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हुडा, अतुल जी और अभिषेक जो है ये तीनों एक बिजनेस में काम करते हैं, दे आर बिजनेस पार्टनर्स। कल को इनको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तीनों लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें हमारा 30 करोड़ रुपए वापस चाहिए, ठीक है। इज इट नॉट गोइंग टू क्रिएट अ रिस्क फॉर द बैंक ऑल्सो, भाई बैंक ने तो लोन दे दिया, जो पैसा आया उसमें से उठा के लोन दे दिया, डिपॉजिट्स में आए, अब ये 3 लोग जो है वो वापस आके पैसा मांग रहे हैं कि मेरा भाई पैसा वापस दे दो, हमें तो अचानक से जरूरत पड़ गई, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ बिग अमाउंट ऑफ रिस्क इन फ्रंट ऑफ द बैंक कि भाई सारे लोग एक साथ आ गए पैसा मांगने, मैं इनको पैसा रिटर्न कैसे करूं। Okay, so this is going to create a kind of a counterparty risk, counterparty concentration risk कि अगर आपने किसी से लोन ले रखा है, एज अ बैंक आपने किसी से लोन ले रखा है या एज एन इंडिविजुअल किसी से लोन ले रखा है, तो वो भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अलग अलग लोन से, अलग अलग लोगों से या अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन उठाओ, ठीक है। इज इट क्लियर, ऑल द 4 फॉर्म्स आर क्लियर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर किसी भी फॉर्म में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, प्लीज आस्क मी राइट नाउ, यस, एल्स गिव मी अ थम्स सर अप। एक बार काउंटर पार्टी कॉन्सेंट्रेशन रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ श्योर, काउंटर पार्टी कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल सा मतलब हुडा सिर्फ सिंपल सा है कि जब आप लोन देते हो किसी को, इफ लेट्स से आई एम एन इंडिविजुअल और मैं लोगों को लोन दे रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार मैं किसी एक इंसान को लोन ना दूं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग लोन, आई वुड नॉट वांट कि मैं सारा का सारा पैसा जो है लोन का हुडा को दूं, ताकि हुडा अगर कल को डिफॉल्ट कर जाती है तो आई विल बी इन ट्रबल, ठीक है, एज अ बैंक। लेट्स से पीपल आर डिपॉजिटिंग इन द बैंक नाउ, लोग बैंक में लाके पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। अब बैंक में ना सिर्फ 2 ही लोगों ने पैसा डाल रखा है, एक हुडा ने पैसा डाल रखा है और एक अभिषेक ने पैसा डाल रखा है, एंड लेट्स से बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या दीज आर जस्ट 2 पीपल आउट देयर, ओके, और इन्होंने बहुत बड़ा पैसा डिपॉजिट कर रखा है, भाई अमाउंट तो 50 करोड़ रुपए है, लेकिन देयर आर जस्ट 2 पीपल आउट देयर। लेट्स से टुमारो हुडा कम्स अप एंड सेज कि मैंने 25 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए थे, मुझे 25 करोड़ रुपए विड्रॉ कर, ठीक है। अब हुडा के लिए तो इट्स अ सिंगल पर्सन आउट देयर जिसने 25 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए थे और वो मांग रही है, लेकिन आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, नाउ बैंक इज लेफ्ट अप विद नो ऑप्शन रेदर देन गिविंग दिस 25 करोड़ रुपीस बैक टू हुडा। सो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक का रिस्क बढ़ गया, बैंक का क्रेडिट रिस्क बढ़ गया कि बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट जो उसने डिपॉजिटर से ले रखा था, जो एज डिपॉजिट उसके पास था, वो उसको एकदम से रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक भी ये कोशिश करता है कि जब वो लोगों से डिपॉजिट्स कलेक्ट करे तो उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डाइवर्स डिपॉजिटर्स होने चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स होने चाहिए, ताकि कोई एक डिपॉजिटर आके पैसा निकाल ले तो बैंक को नुकसान ना हो, वरना क्या होगा, बैंक की हालत खराब हो जाएगी कि भाई मैं कहां से लाके 25 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है। इज इट क्लियर ना हुडा? यस सर। ठीक है, इसका एक और borrower concentration and counterparty concentration दोनों सिमिलर नहीं है। जब हम यहाँ पे काउंटर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, सो वी आर जस्ट टर्निंग इट अराउंड फ्रॉम द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स। एक हम बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और एक हम काउंटर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज हो जा रहा है दोनों की तरफ से कि हमें दोनों तरफ डाइवर्सिटी रखनी है, सिर्फ जिसको लोन दे रहे हैं उससे डाइवर्सिटी नहीं रखनी है, जिससे लोन ले रहे हैं उसकी भी डाइवर्सिटी रखनी है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। ठीक है ना, दोनों तरफ डाइवर्सिटी रखनी है।
ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, व्हाट आर वी स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट। नाउ रिमेंबर, ये मैंने पहले भी केस स्टडी में डिस्कस किया है, दोबारा उसको थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूं मैं, दैट व्हाटएवर टॉपिक वी टॉक अबाउट, वेदर आई टॉक अबाउट क्रेडिट रिस्क, वेदर आई टॉक अबाउट अ मार्केट रिस्क, आप ये बात ध्यान रखिए कि जो ब्रॉड स्ट्रैटेजीज है ना, दे आर गोइंग टू रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करूं, तो ब्रॉडली किसी भी रिस्क के बारे में हम बात करें, डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन एक कॉमन स्ट्रैटेजी है जो बहुत जगह फिट हो जाती है, ठीक है। सो अगर आपको कभी एग्जाम में ना याद आए, वैसे तो नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एंड यू हैव योर पीपीटीज एंड एवरीथिंग विद यू, तो अगर आप स्ट्रैटेजीज पे क्वेश्चन लिख रहे हो या आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट आर द रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, सबसे पहला जो आपके दिमाग में आना चाहिए आंसर, वो आना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन। और ये भी ध्यान रखो, मैं अभी बता रहा हूँ, when you're talking about diversification, don't just talk about one aspect. आपके पास एटलीस्ट 3 पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, जिसके बारे में आप डाइवर्सिटी के एग्जांपल दे सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट अ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, कि भाई हमें अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग ज्योग्राफी में क्या नाम है, लोन देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही जगह लोन देके आ रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री में नहीं लोन देना चाहिए और एक ही बोरोवर को बहुत सिग्निफिकेंट लोन नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन 3 लेवल्स पे होना चाहिए। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, इंडस्ट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, एंड बोरोवर बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है रिस्क लिमिट्स, सेटिंग लिमिट्स ऑन मैक्सिमम एक्सपोजर टू एनी इंडिविजुअल बोरोवर, इंडस्ट्री और ज्योग्राफी। तो अब आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आपने इंसानों के ऊपर रिस्क लगा दिया, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। श्रेय, कैन आई हैव यू एज अ वॉलंटियर फॉर द टाइम बीइंग? Yeah, sure. Yes, sir. श्रेय, थोड़ी देर के लिए आप मान लेते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है, और मैं आपसे लोन लेने के लिए आया हूँ, ठीक है, कि यार मेरे को कुछ जरूरत पड़ गई है, मेरे को लोन दे दो। कितना लोन दोगे श्रेय मुझे? It depends, sir, on the value of the collateral which you will give. दोस्त से कौन कोलेटरल मांगता है श्रेय? Sir, it depends. Some security is needed, na? I नहीं, would मैं like तो to have कोलेटरल some, दे नहीं सकता, मैं दोस्त हूँ, कोलेटरल नहीं दे सकता। probably 5 lakhs. ठीक है। सो अब ये 5 लाख देते समय क्या दिमाग में आया तुम्हारे श्रेय? मतलब ये 5 लाख बोलते समय आई एम श्योर कुछ तो तुमने सोचा होगा। I would think about your past and Hmm. your ability to return the money on time, plus हाँ some interest on this amount if possible. हाँ, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जब भी कोई बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंडिविजुअल किसी को लोन देता है, तो वो अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लेता है कि यार देखो, इससे ज्यादा तो मुझे लोन नहीं देना, ठीक है। अब ये भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप श्रेया के साथ एक और पर्सन आ जाता है लोन मांगने के लिए, लेट्स से हुडा आल्सो कम्स एंड सेज कि भाई मेरे को लोन चाहिए, ठीक है। अब एक एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि श्रेय के पास टोटल जो लिबर्टी थी लोन देने की, भाई देखो हर इंसान के पास एक लिमिट होती है लोन देने की, चाहे वो बैंक हो या फिर वो इंडिविजुअल हो। तो हो सकता है कि श्रेय के पास टोटल जो लिमिट हो लोन देने की वो 5 लाख रुपए ही हो। एक वो एस्पेक्ट हो सकता है जो उसने ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दी। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि श्रेय के पास लिमिट तो 20 लाख रुपए की है, लेकिन श्रेय ने क्योंकि मैंने लोन मांगा, और जैसे श्रेय ने कहा कि आपका पास रिकॉर्ड देख के, आपका बेसिक नेचर देख के, पर्सनालिटी देख के, जो भी आप देखते हो, व्हाटएवर फैक्टर यू लुक इनटू, आई फील कि नहीं यार, इसको 5 लाख से ऊपर तो लोन नहीं दिया। तो एक दूसरा रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या होता है यहाँ पे, कि आप इंडिविजुअल रिस्क लिमिट लगा लेते हो कि मैं कितना इसके ऊपर लिमिट लेने को तैयार हूं, या कितना मैं इसको मैक्सिमम लोन दे सकता हूं। एंड दैट इज डन बाय एवरी बैंक, इवन इफ योर क्रेडिट स्कोर इज वेरी वेरी गुड, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, आप ये कोशिश करोगे कि आप लिमिट तक ही लोन दो, उसके बाद लोन नहीं दो, ठीक है। सो दैट इज अनदर वे ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप लिमिट जब लगाते हो, यू आर कर्टेलिंग योरसेल्फ टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे आप कर्टेल कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज अनदर वे ऑफ मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजी। द थर्ड एस्पेक्ट इज रेगुलरली मॉनिटरिंग, रिस्क मॉनिटरिंग। अब ये हम इसके बारे में क्यों बात करें, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट मॉनिटरिंग? बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होती रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी आज से 5 साल पहले जो फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, आइदर इट कैन बी either stable today, it can be either better than yesterday, or it might not be better than yesterday also. So आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ईयर बाय ईयर चेंज होती रहती है। क्योंकि ये चेंज हो रही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि
जिसको आपने लोन दिया है आप उसको मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से टुमारो समबडी कम्स एंड टेल्स श्रेय ने लेट्स से एक्स पर्सन को लोन दिया हुआ है, ठीक है, और वो इंसान आता है और वो इंसान आपके पास नहीं आता है, लेकिन श्रेय को पता चलता है कहीं मार्केट से कि एक्स जो है उसको बहुत लॉस हो गया बिजनेस में, ठीक है, श्रेय एक्स जो जिसको आपने लोन दिया था 5 लाख रुपए का उसको लॉस हो गया, ठीक है, हाउ आर यू गोइंग टू बिहेव नाउ? व्हाट इज I गोइंग टू will बी be योर a bit इमीडिएट? stressed हाँ, and फिर tense और आगे क्या about करोगे? the एक recovery. स्ट्रेस हो गया, पहले तो वो हो गया, अब देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? I would rush to that person and I will, ask him to return the money as soon as possible. हाँ, I will so ask him ये कि कैसे रिटर्न yes करेगा. yes, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। नाउ व्हाट आर यू एसेंशियली ट्राइंग टू डू? यू आर ट्राइंग टू मॉनिटर योर रिस्क, क्योंकि अचानक से इनको जैसे न्यूज मिली श्रेय को कि यार सामने वाले को बिजनेस में लॉस हो गया, ही स्टार्टेड मॉनिटरिंग कि यार मेरे तो 5 लाख रुपए अभी पेंडिंग है, मेरे 5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, ठीक है। सो सिमिलरली जैसे जैसे आप टाइम पीरियड में आगे बढ़ते हो, यू हैव टू इंश्योर कि आप रिस्क को मॉनिटर भी कर रहे हो। यू नीड टू मॉनिटर द रिस्क ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। और इसमें मैंने एक बहुत लंबा डिस्कशन किया था आपकी ऑफलाइन क्लास में, अगर आपको याद हो, जहां मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करी थी। कैन यू रिकॉल दैट एग्जाम्पल? आप वो एग्जाम्पल रिकॉल कर पा रहे हो? यस, एनीवन? कि सब भूल गए जो क्लास में डिस्कस किया था? वैसे भूलोगे तो काम नहीं चलेगा। यस, हुडा, कैन यू रिकॉल द एग्जाम्पल? Sir, किस चीज का example? I'm sorry, I was not listening for the last 1 minute. Yeah, I'm saying that in the class, in the offline class, we had a discussion where I gave the example of health insurance with Health respect to risk insurance. monitoring. Risk monitoring. What was the example? तो बेसिकली अगर आप आज 5 lakhs का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी रेलिवेंट 10 years later. You have Right. to monitor it and you have to increase that amount, keeping in mind the inflation, keeping in mind how the economy is growing, how the hospital expenses are growing and all that. You have to Perfect. continuously monitor the amount that you are insuring. Perfect. So basically what we are trying to say कि हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने रिस्क को मॉनिटर करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो कम हो गया है और ऐसा तो नहीं है वो ज्यादा हो गया। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देता हूं जो बहुत ही क्रूशियल एग्जांपल है, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो टेनेंट्स होंगे या लैंडलॉर्ड्स होंगे, तो उनके साथ ये होता होगा। आपने मतलब आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले या 10 years पहले कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगता था। मतलब आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ डिफरेंट डायमेंशन हियर, बट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगता था। डू यू एग्री विथ मी? सिर्फ रेंट मांगते थे, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगता था। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मतलब सर, ये आपको कभी हाँ कभी तो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, हर केस में नहीं होता ऐसा। हाँ, तो आई होता मीन क्या मेरे कुछ आप फ्रेंड सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। हाँ, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि right now in the era where you are sitting right now, or let's say which year you are sitting right now, you might see that somewhere it is there, somewhere it is not there. 15 years down the line, if I take you 15 years back, 15 साल पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट का कंसेप्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, ठीक है। देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, पीपल वर नॉट आस्किंग फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। द रीजन वाज रिस्क मॉनिटरिंग। मैं वहीं लेके जा रहा हूँ। रिस्क मॉनिटरिंग क्यों? क्योंकि लोगों को एक दूसरे पे इतना फेथ होता था कि अगर ये इंसान मेरे घर में रह रहा है या कहीं पे रह रहा है और ये रेंट दे रहा है, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। बाकी चीजें नहीं होती थी। और इवन इफ आई टेक यू टू टियर 2 सिटी एंड टियर 3 सिटी, आज वहां पे अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट का कंसेप्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ है, बट प्रोमिनेंट नहीं हुआ दैट एवरीवन इज गोइंग टू आस्क, ठीक है। 5 years later what happened? 5 years later people started asking for a security deposit of 1 month. अब 1 month का सिक्योरिटी डिपॉजिट यू विल फाइंड इट वेरी कॉमन। मतलब 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप कहीं पे घर ले रहे हो रेंट पे, ठीक है, द लैंडलॉर्ड इज गोइंग टू आस्क यू। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं मेट्रोपॉलिटन के बारे में बात करूं, दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, जो लोग भी सिटी से हैं, आई एम श्योर दे वुड अग्री, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है प्लेस टू प्लेस। नाउ दीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज have in fact started asking for a security deposit of 2 to 3 months. 2 से 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे हैं टेनेंट से। इसका मतलब है कि एक ब्रॉड एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, किसी का 25,000 रुपए रेंट है टेनेंट का, और वो से 2 से 3 महीने का अगर सिक्योरिटी मांग लेता है, 2 ही पकड़ के चलते हैं, 2 का मांग लेता है, तो दैट मींस ही इज आस्किंग फॉर 50,000 रुपीस एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। सेकंड, द रेंट विल बी पेड इन एडवांस, सो यू आर गोइंग टू लेट्स से पे 25,000 इन एडवांस। रेंट उस महीने का जिस महीने रहोगे, ठीक है, जहां जिस महीने से रहना शुरू करोगे, प्लस
There was no concept of brokerage 20 years later. लोग मोहल्ले में ऐसे ही लोगों को दिखा दिया करते थे कि भाई साहब या भाई भाभी जी ये जगह खाली पड़ी है, आप देख लीजिए. Now there's a full concept of brokerage. They're going to be proper real estate brokers and property people who earlier were charging 10 days brokerage. Then it turned to 15 days brokerage. Now it's a very common case of 1 month brokerage. अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा लॉजिकली कैलकुलेशन करने की शुरुआत करो आप. 25,000 रुपए आपने रेंट के दे दिए, 50,000 रुपए आपने सिक्योरिटी दे दी, 25,000 रुपए आपने ब्रोकरेज दे दी. इसका मतलब है कि आज कोई इंसान अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक टीनेंट एज अ टीनेंट कहीं एक अच्छे से 2 BHK फ्लैट में या 3 BHK फ्लैट में लेने के लिए जाए, ही इज गोइंग टू इनकर आउट ऑफ पॉकेट इमीडिएट कॉस्ट ऑफ 1 लाख रुपीस. 1 लाख रुपए का एकदम से खर्चा है. एंड दिस इज नथिंग but an element of risk monitoring done from the side of whom? Done from the side of landlord. अगर आप किसी भी लैंडलॉर्ड से पूछोगे ना कि भाई क्यों ले रहे हो 2 महीने की सिक्योरिटी, ठीक है, वो आपको यही कहेगा कि भाई कल को क्या पता आप भाग जाओ, या कल को क्या पता आप हमारा सामान तोड़ के चले जाओ, या हमारा कुछ नुकसान करके चले जाओ. सो व्हाट टेक्निकली अगर आप इसको फाइनेंशियल टर्म से देखो, व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस हैपनिंग बिकॉज दे आर ट्राइंग टू मॉनिटर देयर रिस्क इन अ वेरी स्ट्रिंजेंट मैनर. तो ये एक और क्लासिक एग्जांपल है रिस्क मॉनिटरिंग का जो ओवर द ईयर ट्रांसफॉर्म हुआ है. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस, इज इट क्लियर नाउ क्लास? अदर्स? गुड इनफ. सो कोशिश करिए कि आप जो अपने एग्जांपल्स लिखे ना, देखो मैं बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा ना जिससे आप रिलेट नहीं कर पाओगे, you will find it very difficult to write. आज आप सुन लोगे, आपको समझ में आ जाएंगे, एग्जाम में आपको याद नहीं आएंगे. The best thing that I feel which a teacher can do is to give you more relatable example जो आप एग्जाम में रिकॉल कर सको स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में. वरना आपको ये एग्जांपल याद नहीं आएंगे. एग्जांपल अगर मैं कुछ टेक्निकल एग्जांपल दे दूं किसी कंपनी का, आपको याद ही नहीं आएगा. So whatever subject, and this I'm not just saying it for finance, whatever subject you are studying, try to build upon some real life examples जो आपकी real life में काम आते हो, जो आप रिलेट कर पाओ, ताकि आप उसको लिख सको एग्जाम. ठीक है, तो समझ में भी आ जाएगा और रिलेट भी कर पाओ. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रेस टेस्टिंग. ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, सो रिस्क टेस्टिंग के बारे में बात नहीं करेंगे. स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में ब्रॉड एलिमेंट क्या होता है, अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट कर लेते हो आप, और आप देखते हो कि किस सिचुएशन में क्या होगा. सो व्हाट यू गोना डू, यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट वर्स्ट केस सिनेरियो, और वर्स्ट केस सिनेरियो आइडेंटिफाई करके आपको गलती नहीं करते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको फिर से ऑफलाइन क्लास का एग्जांपल याद दिलाओ, तो मैंने एक सिचुएशन बना के दी थी आपको कि अगर आप कुछ भी क्लास नहीं अटेंड करोगे, कुछ भी नोट्स नहीं पढ़ोगे, यू माइट फेल. अगर थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ के चले जाओगे, यू माइट score let's say 40%, 50%. And if you are attending the classes, you are going through the PPT and you're going through the study material which has been given, you can very easily score a distinction in this particular subject. तो हमने क्या किया, अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट कर दिए. ठीक है, सो आप अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट करके क्या करने की कोशिश करते हो, अब ये देखने की कोशिश करते हो कि आप बेस्ट परफॉर्म कहाँ कर सकते हो. और अगर लेट्स से आपकी सिचुएशन नहीं डिमांड कर रही, तो एटलीस्ट मैं पीपीटीज गो थ्रू कर लूं, या लेट्स से स्टडी मटेरियल गो थ्रू कर लूं, ताकि एक एवरेज स्कोर भी मैं ला सकूं, एटलीस्ट फेल ना हो. सो दैट इज हाउ यू आर इवैल्यूएटिंग वेरियस सिनेरियोस. ठीक है, और क्या पर्पस है उसका, रिस्क को मिटिगेट करना. ठीक है, लास्ट क्या हो सकता है, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, लोन सिंडिकेशन, लोन पार्टिसिपेशन एंड क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर. अब इसका एक एग्जांपल मैं फिर से आपको बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा. आप में से कितने सारे लोग हैं जिनकी कंपनियों ने उनका इंश्योरेंस करा रखा है? यस, आई नीड सम वॉलंटियर्स नाउ. जिनकी कंपनी ने वॉलंटियर करा रखा है, कंपनी इंश्योरेंस कराती है ना, आपका इंश्योरेंस करा लेती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, हुडा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी सर. हुडा अमाउंट बता पाएंगे आप, व्हाट इंश्योरेंस? 1.5L सर, 1.5L है, और हेल्थ इंश्योरेंस मतलब मेडिकल इंश्योरेंस है. ठीक है, आपने और इसके बाहर से कुछ इंश्योरेंस ले रखा है? Not right now, but I am searching for it. So I'm currently looking for one that would suit me best. Good enough. So let's say थोड़ी देर के लिए assume कर लेते हैं कि right now if you go ahead, what amount would you look for, Huda? Let's say hypothetically देखें. I would look for something between 3 to 4 lakhs. ठीक है. Abhishek, I think there's some change in the mode. Yes. So let's say 5 lakh मान लेते हैं, ठीक है? That time भी. So total insurance amount कितना हो गया? 5.5. 5, 6. ठीक है. 6.5. 6.5 हुआ, हाँ. Right.
नाउ लोन सिंडिकेशन और दो इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है, दैट देयर अगर कल को ऐसी सिनेरियो आता है दैट लेट्स से the amount of claim that is happening is, let's say it is less than 5 lakh rupees. So Huda, what you're going to do, you're going to use you're not going to utilize, you're not going to touch your 1.5 lakh policy. आप सिर्फ अपनी 5 लाख वाली पॉलिसी टच करोगे, उसको बेसिकली एक्टिव करोगे, लिंक करने की कोशिश करोगे और उस 5 लाख वाली इंश्योरेंस पॉलिसी से आप क्लेम ले लोगे. ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट हुडा? हाँ राइट. लेट्स से टुमारो गॉड फॉरबिड्स जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 6 लाख रुपए क्लेम जो आ जाता है. ठीक है, in this particular case I'm not getting into the technicalities, keeping it very simple and hypothetical. तो आपको पता है कि यार एक इंश्योरेंस जो मैंने बाहर से ले रखा है उसका क्लेम 5 लाख रुपए का है, मतलब पॉलिसी का अमाउंट, और जो मेरी कंपनी ने दिला रखा है उसका जो अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए. इसका मतलब क्या है कि इस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक्टिव करना पड़ेगा, दोनों इंश्योरेंस को एक्टिव करना पड़ेगा ताकि आप 6 लाख रुपए का क्लेम ले, राइट? ट्रू ट्रू. That is exactly the scenario that happens in case of loan syndication. लोन सिंडिकेशन केस में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ बैंक्स होते हैं जो ये कहते हैं कि यार मैं अकेले लोन नहीं दूंगा. फॉर एग्जांपल कल को हुडा आती है एसबीआई बैंक के पास, कहती है कि मुझे 500 करोड़ रुपए का लोन चाहिए. ठीक है, एसबीआई कहता है यार देखो मेरी कैपेसिटी तो है 500 करोड़ रुपए का लोन लेने की, बट मेरे को रिस्क ज्यादा लग रहा है कि मैं यार बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई दो काम कर सकता है. एक काम वो ये कर सकता है कि वो किसी बैंक को बुला ले. ठीक है, लेट्स से एसबीआई ने बुला लिया एचडीएफसी और उससे कहा कि यार एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं, 500 करोड़ में से 60% का लोन मैं दे देता हूँ. लेट मींस एसबीआई इज गोइंग टू गिव अ लोन ऑफ 300 करोड़ एंड 200 करोड़ का जो लोन है वो एचडीएफसी दे देगा. ठीक है, तो जॉइंटली मिलके एक सिंडिकेशन बना लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं. सिंडिकेशन इज नथिंग बट अ ग्रुप. एक ग्रुप बना लेते हैं, दोनों मिलके हुडा को 500 करोड़ रुपए का लोन दे देते हैं. दूसरा काम ये हो सकता है कि एसबीआई कहता है कि यार मेरे को 500 करोड़ रुपए का लोन देना है, मैं थोड़ा सा ना अपना यहाँ पे रिस्क कम करना चाहता हूँ, मैं अपना सारा पैसा डिप्लीट नहीं करना चाहता, तो मैं लोन तो 500 रुपए का दूंगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक से कहता है कि तुम है ना मुझे 200 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन दे दो. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ, एसबीआई ने लोन तो 500 करोड़ रुपए का दिया, लेकिन 200 करोड़ रुपए उसने कहां से बोरो कर लिया, एचडीएफसी से. ठीक है, अब इससे क्या किया जा रहा है, इफ यू टेक्निकली सी व्हाट इज हैपनिंग इन बोथ द केसेस, व्हाट इज हैपनिंग इन बोथ द सिनेरियोस, you as a bank, I'm talking from the bank's perspective, not from an individual's perspective. ये जो एसबीआई बैंक है ये अपना जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है. क्यों? क्योंकि जो रिस्क है अब वो स्प्रेड हो गया. नाउ द एंटायर रिस्क इज नॉट जस्ट ऑन एसबीआई, रादर इट इज ऑन एसबीआई प्लस एचडीएफसी. तो दो लोगों के ऊपर जो रिस्क है वो स्प्रेड हो गया. ठीक है, पहले फॉर्म में भी स्प्रेड हो गया और सेकंड फॉर्म में भी स्प्रेड हो गया अगर उसने 200 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है एचडीएफसी बैंक से. So this is what is another way of reducing risk in some form or the other. तो ये बैंक्स यूज करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं ताकि वो लोन को रिड्यूस कर सके. सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि जब वो आपको इंश्योरेंस देती हैं, लेट्स से आपको उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए के 10 इंश्योरेंस दे दिए, 50 करोड़ रुपए हो गए, उन्होंने इस 50 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से ले रखा होता है कि कल को अगर उनका क्लेम अराइज हो जाता है तो उनको पीछे से पैसे मिल जाए. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन सो दैट द रिस्क, ओवरऑल रिस्क कैन बी मिटिगेटेड. ठीक है, इज इट क्लियर? ऑल द 5 strategies are they clear to everyone? Any doubts? Yes, so these are the 5 From methods one or of the the 5. strategies, I mean, Right. do banks also take insurance on the loan? I mean, in case there is a credit default. So that would also be a strategy, right? I mean, right. There is these credit default swaps, right? हाँ, they of course one way of doing it is that they can go ahead and they can get into instruments. Of course, those instruments can be undertaken by them, whether it is a credit default swap or whether it is a kind of some other kind of instruments that they're using to hedge their risk. Okay, broadly, those are what you can say is the instruments that we are going to talk about. So I got you, but will it fall in any of these 5 categories, or that will be a sixth strategy? What we can do is in the 5th one where we have written risk mitigation strategies, we can introduce a word here that they can make use of financial instruments, or let's say they can make use of derivative instruments. Exactly. Or you can say that the credit risk transfers includes all such instruments. Yes, we can also say that. But it's more specific to say that if they're using derivative instruments, so we can write about them. Derivative instruments we're going to discuss in detail in the next chapter. बहुत डिटेल में उसको हम फ्यूचर्स फॉरवर्ड सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. राइट. ओके,
चलो let's move forward now. The next topic is credit rating. Now, though we have already discussed credit rating, this is a very important topic from your examination point of view. Once again, you might get a question on credit rating and so on and so forth. So you have to broadly understand कि credit rating का purpose क्या होता है, and that we've already discussed. What are the problems with credit rating? Can you think of any problem? कोई problem आपको समझ में आ रही है credit rating की, जो भी अभी तक हमने पढ़ा? Sir, I know one. Hmm. I think the biggest challenge with credit rating is that the people who are doing the credit rating are getting paid by the people who are getting rated. तो जिनकी रेटिंग हो रही होती है वही लोग पे करते हैं अपनी रेटिंग करवाने के लिए. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, एंड सम करप्शन माइट आल्सो बी इन्वॉल्व्ड in this to get a better credit rating, because they are the ones who are paying to get a credit rating, right? That is one of the major challenges कि आपको जो पैसे दे रहा है, somebody who is giving you money, you're giving a rating for them. So of course it's not possible that you will give them negative rating. Same is the case with auditors. But though auditors are considered to be very transparent, but otherwise भी auditors की जो फीस आती है वो कहाँ से आती है? Auditors की फीस कंपनी से आती है. Right? So that is of course going to be one of the challenges. यहाँ पे मैंने एक image लगा दी है just to give you a broad idea कि इस तरीके से ratings work करती हैं. This is how a rating work. You can have a look on it, not required to learn it, but of course it is important that you understand कि जितनी अच्छी rating होगी उतना ज्यादा आपका ग्रेड होगा. ग्रेड होगा का क्या मतलब है? आपका क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा कम होगा. ठीक है? And as you go ahead, as you go move in the downward direction, आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है? Now, what is important here is that when we are talking about credit rating, it's important to identify what are the advantages to the investor. पहले हम investor के point of view से देखेंगे कि investor को क्या advantages है, then we are going to look into what are the advantages to the issuer, or what do you say, what are the advantages to the issuer company. Company को क्या advantage है. Now there's a word being used, bankruptcy. इसके बारे में मैं तब से बात कर रहा हूँ bankruptcy के बारे में कि भाई आप bankrupt हो जाते हो, दिवालिया हो जाते हो, ठीक है, you're not able to repay your money. So investor के लिए सबसे important क्या है? The investor is able to judge whether this company is having a good financial situation or not. For example, simple सी बात बताओ आप मुझे कि अगर मैं X कंपनी है उसको A स्टार रेटिंग देता हूँ, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि चांसेस ऑफ डिफॉल्ट क्या है? सबसे कम है. ठीक है? Now the chances of default is very low. There's a very unlikely chance that this company is going to get bankrupt. अगर उसका रिस्क प्रोफाइल कम है, सबसे कम रिस्क है, सबसे कम रिस्क मुझे उठाना पड़ रहा है एज एन इन्वेस्टर, if I'm giving the loan to somebody, or let's say if I'm investing in some company through securities, so what is going to happen? मैं bankruptcy से protected रहूंगा. I'll be less assured कि यार मेरा पैसा नहीं डूबने वाला, इसको बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है, रिस्क कम है. सेकेंड एडवांटेज है रिस्क परसेप्शन. आप रिस्क परसेप्शन कैसे बनाते हो? आप रिस्क परसेप्शन बनाते हो किसी पैरामीटर्स के बेसिस पे. They're going to be some of the other parameters based on which you're going to create a risk perception. Here what is going to happen, अगर किसी को रेटिंग अच्छी मिली है, फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा ना, ये आई थिंक बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, जस्ट लेट मी नो इफ यू अग्री विद दिस एंटरटेनिंग थिंग. मॉनिटर्स, क्लास में मॉनिटर्स होते थे सबके क्लास में, याद है? यस, कैन यू गिव मी अ थम्स अप अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो. मैं आपको स्कूल टाइम में लेके जा रहा हूँ. स्कूल टाइम में क्लास में सबके मॉनिटर्स होते थे. कई मॉनिटर्स ऐसे होते थे जो बहुत स्मार्ट होते थे. वो क्या करते थे, वो मैम के सामने, जो क्लास टीचर होती थी उसके सामने शैतानी नहीं करते थे, पीछे से शैतानी करते थे. मतलब किसी को मार दिया, किसी की पेंसिल ले ली, किसी का रबड़ ले लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैम के सामने ऐसा नहीं करते थे. ठीक है? तो क्या होता था, बाद में जब रिपोर्ट कार्ड मिलता था तो क्लास टीचर को तो लगता था कि ये कुछ नहीं करता है, तो बहुत शरीफ बच्चा है. तो क्लास टीचर क्या करती थी, उसको हर जगह क्या कर देती थी, A+A+A+ रेट कर देती थी. ठीक है? और आप घर पे पहुंचते थे, वो लेट से मॉनिटर आपके पड़ोस में रहता था, आपकी मदर और उसकी मदर आपस में बात करती हैं, एंड शी इज लाइक, देखो ये तो पड़ोसी का बच्चा है, गुप्ता जी का लड़का है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट एट, इसको तो सब जगह ग्रेडिंग A+A+A+ मिला हुआ है, और तुम्हें देखो B और B+ मिला हुआ है. वेयर एज यू नो, आपको इनफैक्ट पता है कि आप उससे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, आप कम शैतानी करते हैं, आप टाइम पे जाते हैं, यू आर मोर सीरियस अबाउट हाइजीन एंड एवरीथिंग. स्टिल द अदर पर्सन इज गेटिंग बेटर ग्रेड्स. और उससे होता क्या ग्रेड से? पीपल क्रिएट परसेप्शन आउट ऑफ इट. अब आज भी कुछ साल बाद भी ना, मान लो लेट्स से यू शो इट टू योर फ्रेंड्स, और लेट्स से यू शो इट टू योर और समबडी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स,
वो तो क्या यही परसेप्शन बनाएंगे ना आज का, देखे कि यार इस समय ना ये हाइजीन नहीं मेंटेन करता होगा या ये लड़ाई करता होगा इसलिए इसको ग्रेडिंग खराब मिली है। आप कितना भी आज जस्टिफाई कर लो अपने दोस्तों के सामने बैठ के कि यार मैं तो बहुत अच्छा था, ठीक है, बट वो रिपोर्ट कार्ड देख के तो यही बोलेंगे ना कि यार ये तो अच्छा नहीं था। सेम थिंग इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू दीज रिस्क परसेप्शन बेस्ड एलिमेंट्स। वो देख के यही लगेगा, यही परसेप्शन बनेगा। अगर रेटिंग अच्छी है तो परसेप्शन अच्छा बनाएगा इन्वेस्टर, अगर रेटिंग खराब है तो जो इन्वेस्टर का परसेप्शन होगा वो खराब है, ठीक है। थर्ड इज क्रेडिबिलिटी ऑफ द इशूअर। जो इशू कर रहा है, एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, उसकी क्रेडिबिलिटी समझ में आ जाती है कि यार इनको अगर रेटिंग अच्छी मिली है तो इसका मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, इनको पैसा दिया जा सकता है, इनको लोन दिया जा सकता है, ठीक है। दैट इज अगेन वन वे ऑफ जजिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, और वो उसके लिए एक एडवांटेजियस प्रूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज फैसिलिटेट्स क्विक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपने कई बार देखा होगा ना कि अगर आप किसी से लोन मांगने जाते हो और आपका प्रोफाइल एंड एवरीथिंग इज गुड तो आपको लोन जल्दी मिल जाता है, ठीक है। वेयर एज अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, अगर आपने कभी डिफॉल्ट किया हुआ हो या किसी भी सिनेरियो में आपको रेटिंग अच्छी नहीं मिली हो, तो सामने वाला आपको बोलता है अच्छा सर कल आइए, कल देखेंगे, या परसों आइए, परसों बात करेंगे। सो रेटिंग ऑल्सो हेल्प्स अस इन टेकिंग अ क्विक इन्वेस्टमेंट डिसीजन फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हम सिबिल स्कोर के बारे में बात कर रहे थे, तो अतुल जी ने बताया कि अगर 800 प्लस सिबिल स्कोर है तो आपको तुरंत लोन मिल जाएगा। एक शार्क टैंक में भी एक लेडी बहुत फेमस हुई थी, आई एम श्योर अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो वो अमन गुप्ता से कहती है कि मेरा सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, मुझे लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा और आप इंटरेस्ट रेट जो चार्ज कर रहे हो इतना भी चार्ज नहीं होगा। आई एम श्योर कि आपने ये शार्क टैंक में जरूर देखा होगा। सो यू जस्ट हैव टू ब्रिंग आउट दोस क्यूज एंड एग्जांपल्स फ्रॉम योर रियल लाइफ, ठीक है। तो एक्चुअली वो इश्यूअर के लिए, सॉरी इन्वेस्टर के लिए एडवांटेजेस हो जाता है, ठीक है। लास्ट इज नो नीड टू रिलाई ऑन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और प्रोफेशनल्स। अब अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग कर दिया है एंड इट्स अ वेरी रिलायबल काइंड ऑफ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मतलब स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, फिच है, ठीक है, या क्रिसिल है, इस तरीके की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने क्रेडिट रेटिंग दी है, तो आपको क्या होगा, आपको किसी प्रोफेशनल के पास एडवाइस लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वो प्रोफेशनल भी क्या करते हैं, हो सकता है वो प्रोफेशनल भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग्स ही देख रहा हो, ठीक है, बट आपसे वो फीस चार्ज कर लेगा, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि आप अगर रेटिंग्स को जज कर पाते, इफ यू आर एबल टू इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ रेटिंग्स, you will not be required to go to the any advisor or any kind of professional or brokers, ठीक है। So these are some of the advantage from the investor point of view जो आपको पता होने चाहिए। Now coming to the advantages of issuer, issuer को क्या क्या एडवांटेज होने वाला है? सबसे पहला एडवांटेज होने वाला है लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। सेम एग्जांपल जो अभी मैंने शार्क टैंक इंडिया का दिया कि अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आप कम अमाउंट पे लोन आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम पैसा आपको देना पड़ेगा। सेकेंड है ब्रॉडर ऑडियंस ऑफ बोरोइंग। अगर आपके पास आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो आप किसी भी बैंक के पास जाके पैसा ले सकते हो ना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको एक ही बैंक से पैसा लेना पड़े। बट अगर आपकी सिचुएशन खराब होती है, फॉर एग्जांपल लेट से कल को आपको पैसे की जरूरत होती है और आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो आप किस दोस्त से पैसा मांगो? उस दोस्त से जो आपके सबसे करीब है, या उस दोस्त से जो कोई भी ऐसा सा ही दोस्त है, ठीक है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड से जाके पैसा मांगो। तो सिमिलरली अगर आपकी सिचुएशन अच्छी होती है, आपको पता है आप पैसा लौटा दोगे, ठीक है, आप किसी से भी जाके पैसा ले सकते हो। सो इट क्रिएट्स अ ब्रॉडर ऑडियंस फॉर बोरोइंग। थर्ड इज rating also acts a marketing technique. Yes, would somebody like to elaborate upon this? Why are we saying that credit rating is a marketing technique? Yes, anything that comes to your mind? Marketing technique कैसे है ये? Sir, in case a firm has a good credit rating, the customers will also form a good perception for them. The customers would will also also form a good believe that perception. Yeah, the customers would also find a good perception, and the reputation in the market, which we also call it as goodwill, वो भी improve हो जाती है कि देखो आप अपने कमरे में बैठे हुए हो, आप अपने रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आपको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, लेकिन वही बात सोचो आप अपने स्कूल में टॉप करते हो, ये सारी चीजें होती हैं, आपको पता है आप अच्छे हो, आपकी मदर जाके सोसाइटी में बोलती है अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, सोसाइटी वाले भाव नहीं देते हैं, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। और वही बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और जो फोटो है वो न्यूज़पेपर में आ जाती है। जस्ट थिंक इट वेरी लॉजिकली, वो आपकी जो फोटो है वो न्यूज़पेपर में आ जाती है, लेट्स से आप टीवी में आ जाते हो, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्या होता है एकदम से रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है, अरे यार बहुत अच्छा होगा तभी तो न्यूज़पेपर में नाम आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है जो पीयूष जो लेंसकार्ट के फाउंडर है उन्होंने कहा था कि जब तक टीवी में नहीं आए थे तब तक कोई नहीं जानता था, बिजनेस तो चला ही रहे थे, प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे थे, बट तब तक कोई जानता नहीं था, रेपुटेशन थी नहीं।
एक बार वो टीवी में आ गया एज शार्क टैंक जज, उनकी कंपनी की सेल्स भी इंप्रूव हो गई, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई, मार्केट रेपुटेशन भी इंप्रूव हो गई, और फॉरेनर्स अब उनको रीच आउट कर रहे हैं टू गिव लोन्स कि भाई अगर आपको पैसा चाहिए तो हम आपके में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस रेटिंग ऑल्सो एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ अ मार्केटिंग टेक्निक, कि आपकी मार्केटिंग हो जाती है कंपनी की, यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। द फोर्थ इज सेल्फ डिसिप्लिन बाय कंपनी। एक बार अगर आपको अच्छी रेटिंग मिल गई, ठीक है, एक बार आपने अच्छी रेटिंग ऑब्टेन कर ली, तो कोई भी ना अपनी रेटिंग खराब नहीं करना चाहता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक बार अगर आपने अच्छी रेपुटेशन बना ली तो इन जनरल कोई भी उस रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहता। इंप्रूव भले ना करे बट यू विल ट्राई टू मेंटेन दैट आउट, ठीक है। इसीलिए वो एक सेल्फ डिसिप्लिन भी इनकलकेट करता है इंश्योर कंपनीज के अंदर, ठीक है। द लास्ट इज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन काइंड ऑफ पब्लिक इश्यूज। कल को अगर आप पब्लिक इशू करने के लिए आते हो, लेट से आप मार्केट से पैसा उठा रहे हो, आईपीओ लेके आ रहे हो मार्केट के अंदर, उसकी भी जो मार्केटिंग की कॉस्ट होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम एक और टर्म देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। कंपनी जो फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करती है, मार्केटिंग कॉस्ट इनकर करती है, अवेयरनेस के बारे में इनकर करती है। फॉर एग्जांपल जब नाइका का शेयर आया, पीपल न्यू अबाउट नाइका। पेटीएम का शेयर आया, पीपल न्यू अबाउट पेटीएम। कोई नई कंपनी लेके आएगी जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, जिसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं है, तो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर इन जनरल कंपनी की अगर रेटिंग अच्छी है तो जो कॉस्ट ऑफ पब्लिक इश्यूज है वो भी अल्टीमेटली कम हो जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टिल हियर? एनी डाउट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्रेडिट रेटिंग क्लियर होना चाहिए, एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर क्लियर होना चाहिए, एंड एडवांटेजेस टू द इश्यूअर कंपनी भी क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। Yes, I'm waiting for your thumbs up because I'm seeing the screen right now. ठीक है, perfect, perfect. So I think it's very well clear. I believe that there are no doubts out there. Now, सर एक चीज पूछनी थी मुझे। please. जो कंपनीज होती हैं वो मोर देन वन रेटिंग एजेंसी से अपने आप को रेट कराती हैं ठीक या है, नहीं? हाँ बिल्कुल। ओके। And another question I had was that if a particular company, they issue corporate bonds, do all the corporate bonds carry same credit rating, or different bonds can have different credit ratings? No, different. Every time they come up with a new kind of an instrument, they will have to share their fundamentals and they will be provided with a separate rating. Because there are two reasons for it. One, the time period changes. Let's say आपने same type का भी bond issue किया. Let's say I give a category as bond A. One I am issuing it in the month of January. The other one I am issuing in the month of June. 6 months के time period में company के financial change हो गए हो, ठीक है? That is why the instrument becomes important. Second part is even if you are issuing after 6 months, तो fundamentals change होने के साथ साथ, let's say you are changing the instrument also, ठीक है? You are using some different category where the interest rate is different. Again, the risk perception is going to change and therefore it would require a separate rating. So हर instrument की separate rating करनी पड़ती है. Okay. Okay. Yes, Bhavna, you are asking something? No sir, no sir. Okay. Always remember, एक हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. It's a very well known question जो मैंने इंटरव्यू में कई बार देखा है. Can credit rating be a basis for recommending a particular company share? अभी जो क्वेश्चन पूछा मैंने, ध्यान से पढ़िएगा. दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग. ये इंटरव्यू में मैंने बहुत बार पूछा है व्हेन आई सिट फॉर कंपनीज लाइक Deloitte and KPMG on their boards. This is a very well known question. Can credit rating be a tool or a parameter by the credit rating agency recommending the purchase of a security? What is your take on this? Yes. Is it a recommendation? What do you think? Yes. Anyone? Very easy I question. mean, you're saying purchasing shares of that company or what? I mean, I didn't get the question. Recommendation. मतलब So recommendation for buying their bond or what? Anything. So for bonds, I agree in the sense that, I mean, if the rating is high, then you can invest in that company's bond. But if when it comes to, I mean, shares, that would depend on many other things as well, not just on the, credit risk. And for bonds, I would take the credit risk. Pardon? No. The answer is no. Because answer is no. Yeah. Yes, because whenever these companies, these credit rating agencies are giving rating the instruments,
they are very clear on the line that we are only talking about the credit worthiness. Okay. Yes. We are not giving any kind of recommendations. Whether you want to invest this into this particular bond or not, whether you want to invest into the security or not, that is going to be your total analysis. Because we are rating based on just one factor, which is their credit worthiness and nothing else. हम सिर्फ credit worthiness के बारे में बात कर रहे हैं. We are not talking about any other parameter. So it is not a recommendation to buy or sell. It is just a recommendation that whether this instrument has a good credit worthiness or not. That's it. So, but it can be a parameter. That is going to be used by the investor. That is a personal discretion. आप वो personal discretion exercise कर रहे हैं. But the credit rating agency is not giving you a recommendation. These are two different things, right? Okay. ठीक है. I tell you कि भाई this topic is very very important. ठीक है. Let me give you an example. I tell you that this topic is very very important. You study it well. ठीक है. Now whether you study it or not, that is your own discretion. राइट मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. सो सिमिलरली दे आर रेटिंग इट कि भाई क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे दिस इज अ A स्टार प्रोडक्ट. बट टुमारो यू कैन नॉट कम एंड से कि भाई तुमने रेटिंग की थी इसलिए मैंने ये परचेज कर लिया तो अब तुम जिम्मेदारी लो. दैट इज व्हाई इट इज अ नो रिकमेंडेशन. इट इज ओनली अ रेटिंग ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस. दैट्स इट. ओके. Yeah. So in fact, yeah. in fact, when you were earlier asking that question about what is the issue with credit agencies. I mean, that's what I was thinking. I'll be saying that I mean that see they are not held responsible for anything. I mean, like you cannot take them to the court. Right. So I mean, and my question is why? Why is it like that? If they've been asked to do a rating and they've given a AAA rating to a particular instrument, I mean, one should be able to file a case against them to justify. I mean, like if they have done it through for some fraudulent or for some wrongdoing. I mean, why they cannot be held responsible for their rating? Now you have posed a very good question and I'll give you a very what do you say, a very comprehensive answer. Atul ji, I'm sure you must be aware that when the best example is for the auditors. I think auditors become a more serious case, right, Atul ji? So when these auditors are giving their audit opinion, right? Audit opinion or is a more comprehensive or what you can say a more strong and robust element when it comes to rating the bankruptcy or what you can say the true and fair view of a financial statement, right? But still the word that they write is we are giving only reasonable assurance. This is a very technical term that they use in their auditor's report. I'm very sure somebody who has read audit or who have ever gone through audit report would understand. They use the word reasonable assurance. So what are they saying? हम एक reasonable assurance दे सकते हैं कि जो documents हमें दिखाए गए हैं, क्योंकि documents किसने दिखाए हैं? Company ने दिखाए हैं, ठीक है? जो भी हमें financial statement दिए गए हैं, that has been provided by the company. So based on our analysis, we are saying we are giving a reasonable assurance that the things are true and fair. But if something comes out to be wrong tomorrow, we are not held responsible. We cannot be held responsible. This is what the auditors also do. Now, you are absolutely correct that this is a flawed element. And therefore, now what has happened is, now with the over of period of time and with a lot of people claiming कि भाई फिर फायदा क्या हुआ? Auditor तो reasonable assurance बोल के बच गया कि reasonable assurance है हमारी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, ठीक है? So because of this, now what they're doing, now they're coming up with laws and regulation where the auditor will have to prove that what was the reasonable assurance methods or the techniques that he has used to assure that it was showing a true and fair view. और अगर कहीं से ये prove हो जाता है court of law में that they have not taken sufficient methods, they have not taken sufficient techniques, they can be dragged to the court of law. So these were some problems, or what you can say there were some lacunas. Over the period of time, the judiciary or what you can say the committees are working on it and they're trying to methodologically improve upon the liability or what you can say whether these can be held responsible or not. Because अगर ऑडिटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ सुनो तो वो ये कह देते हैं कि भाई हमें तो इन्फॉर्मेशन कंपनी नहीं दी है ना, हम क्या कर सकते हैं? अगर कंपनी इतना अच्छे से फ्रॉड कर रही है कि हमें अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है तो हम कंपनी में जाके थोड़े ना बैठे रहेंगे पूरे साल ऑडिट करने के लिए. वी तो विल गो एट द लास्ट वंस द बुक्स आर क्लोज्ड, वंस वी गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो हमारी भी पूरी गलती नहीं है. एंड कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स वुड बी लाइक कि अगर एक ऑडिटर एक बड़ी कंपनी लेट्स से डेलॉयट और लेट्स से केपीएमजी इफ दे आर डूइंग एन ऑडिट
Why can't they be held responsible? So a kind of way there's a kind of a mismatch in terms of framework. उसको धीरे धीरे resolve करने की कोशिश की जा रही है. I am very sure very soon they're going to come on to credit rating agencies also. I hope that answers the question, Adulji. Yes, it does. Thanks. Yeah. Yes. So that is how it is. So, so these are some of the aspects. Now we'll quickly jump to the limitations part. So one is inaccurate and biased rating, क्योंकि उसका reason यही है कि अगर आप आपकी methodological proper नहीं है, अगर आपके पास systems in place नहीं है, ठीक है, that is going to become a problem. And of course bias भी हो सकती है, because हो सकता है कि जैसे ऑडिटर फीस के केस में होता है कि ऑडिटर की फीस एक्चुअली 5 करोड़ रुपए की है, कंपनी कहती है कि हम आपको 10 करोड़ रुपए दे देते हैं, बट आप हमें पॉजिटिव रिव्यू देना. यू विल बी हेयरिंग अ लॉट ऑफ केसेस. मतलब आप पीछे जाके जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कभी सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिले, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स का टॉपिक पढ़ने का मौका मिले, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ केसेस. एंड लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली, वेरी फ्रैंकली, किसी भी कंपनी में अगर फ्रॉड हो रहा है तो सबसे पहला इंसान तो नहीं बोल सकता, क्योंकि कंपनी को सबसे पहले पता चलता है. दूसरा इंसान जिसको सबसे पहले पता चलता है, दैट इज टेक्निकली एन ऑडिटर. बिकॉज ऑडिटर इतना स्मार्ट होता है टेक्निकली, उसके पास इतने प्रोसेसेस और इतनी टेक्निक्स होती हैं जिससे वो पता लगा सकता है कि फ्रॉड हो रहा है. तो 90% ऑफ केसेस में जहां पे फ्रॉड्स हुए हैं पास्ट में, उसमें एक्चुअली ऑडिटर इन्वॉल्व था फ्रॉड में, तभी वो फ्रॉड हुआ था, वरना वो फ्रॉड नहीं हो सकता. ठीक है. सो इसीलिए बायस जब रेटिंग दी जाती है, सो वी आर अज्यूमिंग कि किसी भी तरीके की आपस में रिगिंग हुई है बिटवीन द कंपनी एंड द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन. द सेकंड इज स्टैटिक स्टडी. अब स्टैटिक स्टडी क्यों कह रहे हैं, मैं आपको रिसर्च और एनालिटिक्स में नहीं ले जाना चाहता, बट ब्रॉडली क्या होता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स द मेथोडोलॉजी इज ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इज पुअर इनफ, और वो सारी इंफॉर्मेशन को अकाउंट फॉर नहीं करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक फाइनेंस का बहुत अच्छा कंसेप्ट है. फाइनेंस की अच्छी बात क्या है कि यू कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स आउट देयर. एक बहुत अच्छी थ्योरी है, लेट मी सी, किसी ने सुनी है क्या? EMH, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. EMH, efficient market hypothesis. Yeah, Yes, we have heard let of me see. it. Atulji, you have heard of it? Yeah, we have heard of it. Yeah. Yes. Would somebody would like to explain? Bhavya, sorry, Bhavana. Anybody? What is this theory all about? So it's about market reflecting the changes. Go ahead. You're on the right track. शेयर्स में चेंजेस का रिफ्लेक्शन आ जाता है, साथ के साथ तो वो अच्छी मार्केट, स्ट्रॉन्ग मार्केट होती है. ठीक है. मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. हाँ, भावना वाज ऑलमोस्ट क्लोज. ठीक है. जब हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं, तो ये एक हाइपोथेसिस है जिसको अलग अलग लोगों ने प्रूव करने की कोशिश करी. हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? एक स्टेटमेंट है स्टैटिस्टिक्स में जिसको आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस 3 तरीके की मार्केट के बारे में बात करता है. वन इज वीक फॉर्म. चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी रिटन अप इन द एग्जांपल. वन इज वीक फॉर्म, वन इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म. आई थिंक काफी लोग को याद भी आ गया होगा जैसे मैंने ये वर्ड बोले. एंड द थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट. 3 तरीके के मार्केट्स हैं. वीक फॉर्म ऑफ मार्केट क्या कहता है कि वॉट एवर हैज बीन द पास्ट इंफॉर्मेशन, जो भी पास्ट में इंफॉर्मेशन हुई है उसको हमने अकाउंट फॉर कर लिया है, वी हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन, एंड दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इनटू द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. मार्केट प्राइस किसकी? किसी सिक्योरिटी की, जो है लेट्स से एक्स. तो वीक फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो पिछली इंफॉर्मेशन है, पास्ट इंफॉर्मेशन है, उसको हमने अकाउंट फॉर कर लिया. द मोमेंट वो मूव टुवर्ड्स सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वी से पास्ट इंफॉर्मेशन भी अकाउंट फॉर कर ली है और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन भी अकाउंट फॉर कर ली. मतलब जो पास्ट में इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने नोट कर ली है, जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन थी उसको भी नोट कर लिया, और उसके बेस पे हमारे मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट हो. द थर्ड इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, जो क्या बोलता है, पास्ट भी ले लिया हमने, प्रेजेंट भी ले लिया है, एंड थर्ड जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज आल्सो गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस. ठीक है. सो these are the 3 forms of market, these are 3 elements of market. Now you have to answer and tell me which of these is practical. इसमें से कौन सा प्रैक्टिकल है और कौन सा प्रैक्टिकल नहीं है. आपको क्या लगता है कौन सा रियल में होता है? Yes, please. Yes, कौन सा रियल मार्केट में आपको लगता है कि होता होगा? वीक फॉर्म सर. Yes, others? One answer for weak form.
Yes. Please, please. It's a wonderful topic to talk about. I don't think कि यहाँ पे हमें discussion Can you रोकना ask your चाहिए. question again? What was the question actually? I'm asking that there were three forms of market: weak, semi-strong, strong. What do you think real life में कौन सा होता है actually? Okay. Semi-strong. हाँ. So actually real life में semi-strong होता है. The very fact of the reason is कि insider information जो होती है वो सबके पास होती ही नहीं है. If you do not have that information, how can the stock prices reflect that information? So basically जो real life में work करता है, that is a semi-strong form of market. अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? Why did I even talk about this? Because यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा हुआ है static study, where they are saying that the present and past data of the company is going to be taken into consideration. आप उसको ध्यान में रखोगे और उसके बेसिस पे रेटिंग दोगे. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक लॉजिकल सी चीज है. अगर मैं सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में बात करूं तो ये बात तो लोगों को भी पता है. फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग देने का फायदा क्या हुआ? अच्छी बात तो तब है ना, मजेदार बात तो तब है ना, जब आप फ्यूचर के बारे में भी थोड़ी सी एनालॉजी निकाल सको, फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सको, फ्यूचर को भी फोरकास्ट कर सको. दैट इज अ मोर कॉम्प्रहेंसिव वे ऑफ सेइंग इट. एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर एबल टू टेल मी कि भाई कल को चांसेस हैं फ्रॉड हो जाए तो आप इस कंपनी में पैसा मत डालिए, या देयर आर चांसेस दैट टुमारो दिस कंपनी माइट नॉट बी एबल टू पे द मनी, is not a credit worthy company, it might not be able to pay the money, and therefore you should not, or you might not, based on the parameter, put your money out there. So अगर स्टैटिक स्टडी है तो आप सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट डेटा के बारे में बात करते हो, आप फोरकास्टिंग नहीं कर पाते. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन. टेक्निकली स्पीकिंग, एनी स्टैटिस्टिकल मेथड दैट यू आर यूजिंग, any econometric method that you're using should be capable enough to do forecasting. अगर वो forecasting नहीं कर पाता है तो आज के टाइम में it is worthless. Just remember this line. आज के टाइम पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर. इसीलिए जो आजकल एआई या डेटा एनालिसिस वाले मॉडल्स जो आ रहे हैं, जो बिग डेटा वाले मॉडल्स आ रहे हैं, दे आर ऑल यूजिंग फोरकास्टिंग टूल्स. ओके, सो अगेन दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. ओके, विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन. अब अगर बिजनेसेस ने कंपनीज को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सारी इंफॉर्मेशन दी ना हो, मैंने छुपा दिया हो कि भाई मेरे ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, या मेरे पास एक और पर्सनल लोन है जो मेरी कंपनी ने ले रखा है, अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं देता ही नहीं हूँ तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, रेटिंग खराब हो जाएगी. ठीक है, खराब हो जाएगी मतलब रियल रेटिंग नहीं आएगी. ठीक है. लास्ट, अ रेटिंग इज नॉट अ गारंटी ऑफ अ कंपनीज सक्सेस. A specific instruments credit risk is evaluated by company. ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट को आप इवेल्युएट कर रहे हो, ठीक है, तो वो ये गारंटी दे दे कि कंपनी अच्छी है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाएगी. ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, is it clear till here? Any doubts till here? We have covered a lot of portion. Just let me know if it is clear till here. Any questions till here? Sir, Yes. This concept that you were talking about, efficient market hypothesis. Hmm. So, you mentioned that currently it is practically it is semi-strong, Yes. right? But, we are told, everywhere it is mentioned that, all the markets are, and especially the NASDAQ and, US stock markets, that they are the most efficient form of markets. And my understanding is that, they are not semi-strong, they are strong markets. Even Sensex and NSE, I know, like there is a difference in opinion. Some say it is semi-strong and some say it is strong now. But why do you say that? Practically it is semi-strong, because I thought, the definition would mean that even if you have an insider information, you cannot make abnormal profits in these markets because they are so efficient markets. Even if you have an insider information, you will not be able to make abnormal profit, because moment you start doing your trade, it will be known to the public, and today in this electronic world, information would spread so fast that nobody will be able to rig the market, even if you have insider information. No, but then why are there cases of insider trading then? No, insider trading will happen, but they will not be able to make abnormal profit, and that is the reason these markets are efficient. But people are making abnormal profit. That is a fact. We have recent cases of 2010. We have recent cases of 2015 where people have made this. That's what I'm asking. So the idea is, I'll tell you what is the difference here. The idea is that when people say that it is a efficient market,
they are not talking about strong form of market. They're talking about semi-strong form of market. And researchers now, what semi-strong practically claiming is that researchers' angles of claiming that even if people are saying that they are strong, that the markets are strong, so there have been numerous amount of research conducted on just proving efficient market hypothesis. For example, we are sitting in the year 2024. Efficient market hypothesis was given by pharma in the year 1960. 1960 में efficient market hypothesis दी गई थी. That means approximately 64 years back. Why are we still talking about it? All those concerns which were there in 1960s have actually become redundant. Why are we still talking about it? Why is it still relevant? Because people have not been able to prove that whether it is a semi-strong market or a strong market. It's very difficult to actually prove it. But researchers say that if you claim, if markets are claiming that their strong form of efficiency exists, why are insider trading happening? You will find that not just in India, but whatever company, whatever economy you want to pick up, there are cases of recent years where insider trading has happened and people have earned lakhs of money. The reason is that when insider trading happen, they do not enter into a huge volume of trading from one party. What they do is they spread the information to 5 parties, and there are 5 parties who are doing multiple trades out there in small bunches. So when they are using this insider information and when they are trading in bunches, that information or that trade is not going to reflect into the current prices, and therefore insider trading happens. So therefore, yeah. So forex market जो होगी वो भी मतलब सेमी स्ट्रांग में ही काउंट नहीं, होगी? we are not talking about forex market. We are talking about stock market. Forex market and stock market are two different things. Okay. We are only talking about stock market right now. Okay, so broadly speaking, researchers have claimed that it's almost impossible that the insider information gets reflected into the public information, and there are no abnormal gains. And the day we are able to achieve that, no person will be able to make any kind of abnormal profits with the help of insider trading. वो होना बंद हो जाएगा actually. Okay, but still, I would agree that still there is a debate on this. But broadly, if we have to talk about researchers, they would go about it. And also now, if I have to bring another dimension, there is one more dimension to it that is again proven by researchers. That is anomalies of efficient market hypothesis. So see, the moment you talk about finance, you will have to be updated about latest. मतलब, if somebody asks me, मुझे static syllabus से problem ही यही है. If somebody asks me कि static syllabus do not get updated, वो कभी अपडेटेड नहीं होता. एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस 1960 में पढ़ रहे थे, बट क्या हम अनोमलीज पढ़ा रहे हैं? सर्टेनली नॉट. अनोमलीज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं. अगर आप ये कहते हो कि every information that is there, whether past, present or future or insider, if it is getting reflecting in the market, then what is the role of market sentiments then? फिर market sentiments तो work ही नहीं करने चाहिए. Market sentiments क्यों work करते हैं? Why do people lose money then? Or why do some people are able to earn abnormal profit and some people are able to some people lose a lot of money in the stock market? The reason is that there are anomalies, and those anomalies are known as behavioral biases. That is the reason why the concept of behavioral finance or behavioral economics has come into place. And behavioral finance is one such domain which has challenged efficient market hypothesis. कि efficient market जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि लोगों के behavioral biases अलग होते हैं. कोई इंसान कहेगा मैं 50 रुपए के लॉस पे मैं भी होल्ड करके चलूंगा. कोई इंसान कहेगा कि मैं 50 रुपए का लॉस ले नहीं सकता, लेट मी सेल इट ऑफ. सो efficient market hypothesis टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता रियल मार्केट में, रियल लाइफ. So anomalies is one more example, one more criticism that actually justifies why they are more efficient, strong form of efficient market. See, I mean, the definition of efficient market shouldn't be more from a perspective that nobody can make abnormal profits in this market, irrespective of their behavioral biases. Somebody might say this is expensive market. Somebody might say this is a cheap market. That's their individual bias. But the point is, both of them cannot make abnormal profits in this market. Right? Even if I do a short sale, there would be an equal number of people doing a buy sale, and both the parties will never be able to make abnormal profits.
That mean, is the assumption that they're making. Atul, Right. you're absolutely correct. This is the assumption that they're making, but this is not happening in real life. That is what researchers are saying. There are people, for example, if you take the case of, that's why I suggested that book last time, Psychology of Money. Right. There they clearly show that if there are no abnormal gains out there, during the time of financial crisis, that is 2008 financial crisis, Warren Buffett is one such example who has earned money, and the highest amount of money that he has earned over the last period of 60 years. So why was that happening? No, but that is, see, that is why, I mean, nobody stopped anybody else to do what Warren Buffett did. Right. Right. So it's not that, we blame the market or we blame a company or we blame anything. Individual biases, you're responsible because you are risk averse. Somebody might be more risk averse, some less, but at least the markets are not influencing your ability to make profits, right? Market is giving equal opportunity to all of us to make same amount of profit. None of us making an abnormal profit. Right. That is altogether a different dimension that we are going into now. When we say that markets are efficient, the ultimate outcome is nobody should be able to earn excess return. Whatever be the cause is a different element now, whether it is a behavioral element. That is why behavioral finance people have introduced ki if I have a certain set of behavior that needs into taken into consideration. Why? Because let's say 50 people are behaving in one form, 50 people are behaving in one form, we are going to move into the characteristic of large number of buyers and large number of sellers, as happens in case of perfect competitive market. But perfect competition is a myth. It doesn't exist. Right. So technically speaking, if there are two set of people behaving differently in a large set of market, they would certainly, the markets will not be efficient. You will move into one of the dimensions or one of the directions, or the markets would move into one of the directions where there are more number of people out there. And the classic example is the Hindenburg case. You look into Hindenburg case, and I would share a case study over it. I'm writing over it. It's just sent for the review. Probably it will get published sometime very soon. Hindenburg report is a very good example to show that efficient market doesn't exist. Again, one of the classic examples. So we can have this discussion also later also. Sure. But the broad idea is that, the broad idea is that it's very difficult to actually say that whether they're efficient or not. Still a debate is going on it. So I think we can have a broader understanding of it. Yeah. But wonderful. It was a very good insight, Atulji, from your side. Thank you for initiating that. Thank you, sir. Now let's move to the next topic, that is capital charges. Now I've already discussed this capital charges. Still, I'm just giving a quick recap of it. So what is capital charges? Capital charges is basically the kind of buffer that is being created by financial institutions or bank, where what you're trying to do, you're trying to enhance your ability to withhold any kind of risk. जहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे Basel Accords, Basel norms आ गए, where you give some kind of regulations, आपने कुछ standard set कर दिए कि 8% का आपको बफर बनाना है, ठीक है. You try to identify risk weighted asset, जिसको RWA कहते हैं. Risk weighted assets क्या हो गए भाई, अगर आप 5 लोगों को लोन दे रहे हो, everybody is not going to be associated with the same amount of risk. अगर आप मुकेश अंबानी जी को लोन दोगे तो उनके पास रिस्क का वेट सबसे कम लगाओगे. लेट से आपने एक रेट दे दिया कि मुकेश अंबानी जी को जो लोन दिया उसमें 10% का ही रिस्क है. किसी दूसरे इंसान को लोन दोगे, आप कहोगे यार ये 25% का रिस्क है. किसी तीसरे इंसान को लोन दोगे, आप कहोगे यार 60% का रिस्क है. सो you try and identify कि जो हर लोन आप दे रहे हो, लोन इज व्हाट, एन एसेट फॉर अ बैंक, राइट. सो उसमें क्या वेट्स असाइन हो सकते हैं और उनको हम रिस्क वेटेड एसेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं. इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक विल बी एबल टू नो कि मेरे पास कितने रिस्क वेटेड एसेट है और उसमें कितना परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट होने का चांस है. ठीक है, दैट इज अगेन वन वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा, कैपिटल चार्ज. क्योंकि हमें सर, are you sharing a PPT? I mean, are you projecting a PPT, because it is not showing? Just a second. Is it visible now? Yeah, it is visible now. Yeah, so I talked about Basel Accord first, where we talk about the Basel norms, where the regulations came up. Then we talked about risk weighted asset, where every asset is being given some kind of risk. The third is a standardized approach. Now, why do I say that it is a standardized approach? Because when RBI gives guidelines, or when these international institutions give guidelines, what are they essentially doing is they're giving a very standardized rate कि आपको 8% का बफर बना के चलना है. ठीक है. अब आप 8% का जब बफर बना रहे हो तो उसमें
क्या है, देयर माइट बी वन इंस्टीट्यूशन विच माइट बी रिक्वायरिंग मोर अमाउंट ऑफ बफर, हो सकता है उसको 15% की बफर की रिक्वायरमेंट हो, एंड देयर कैन बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन which might only be requiring let's say 5%. So standardized approach is sometimes a good approach कि भाई एक अच्छा सा लिमिट बना लिया which is going to be taking care of all the banks and financial institutions, and it can also pose challenge because वो institution जिसको ज्यादा रिस्क था, उसको ज्यादा बफर मेंटेन करना चाहिए था, they are not able to maintain that buffer. Okay. The next aspect is internal rating based approach. इसमें आप क्या करने की कोशिश करते हो, आरबीआई तो आके आपका इवैल्यूएशन करेगा ही, ठीक है, या लेट से आपको रेटिंग्स प्रोवाइड करेगा, आपकी इवैल्यूएशन करेगा, रिस्क, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. एज अ कैपिटल चार्ज व्हाट यू डू, आप इंटरनली एक अप्रोच लगाते हो, इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस करते हो, और उसके बेस पे डिटरमाइन करते हो कि आपका रिस्क कितना ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, वन वे इज दैट आई टेक अ स्मॉल टेस्ट ऑफ यू, जैसे मैं बीच बीच में आपसे सवाल पूछता रहता हूँ, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ आइडिया कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है. वन अदर थिंग इज दैट यू सिट बैक टुडे, आज आप घर पे बैठते हो आज की क्लास के बाद, एंड यू सी कि पहली क्लास में सर ने क्या पढ़ाया था, एंड यू जस्ट ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग. लेट्स से यू आर एबल टू रिकॉल एवरीथिंग, ठीक है, तो ये एक तरीके का असेसमेंट आपके लिए हो जाएगा कि आपकी तैयारी एग्जाम के लिए कैसी है. लेट्स से यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, दिस इज गोइंग टू टेल यू that you will require a lot of time and efforts in order to prepare for the examination. So in terms of capital charges हम कुछ भी नहीं कर रहे, एक internal rating evaluate करके, एक internal approach use करके we are trying to estimate कि हमारा कितना रिस्क है, ठीक है, और जितना रिस्क है उसके हिसाब से हम कैपिटल चार्जेस को इंप्रूव कर देंगे, बफर्स क्रिएट कर देंगे, ठीक है. लास्ट एलिमेंट इज एडिशनल कैपिटल बफर, ठीक है, इन एडिशन टू स्टैंडर्ड कैपिटल चार्जेस. अब जैसे मैंने एक बार आपको बोला कि भाई आरबीआई ने कह दिया कि 8% का आपको बफर मेंटेन करना है, आपको कैपिटल चार्जेस मेंटेन करना है, ठीक है. लेट से आपको इंटरनली ऐसा लगता है एज अ बैंक, क्योंकि देखो नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, आपको कोई रोक नहीं रहा है. 8% वो रिक्वायरमेंट है जो रेगुलेटरी बॉडी ने सेट कर ली है, या इंस्टीट्यूशन ने सेट कर लिए हैं, बट नोबडी स्टॉपिंग यू टू गो अहेड एंड क्रिएट एडिशनल बफर. तो आप कैपिटल चार्जेस में क्या करते हो कि ठीक है 8% का मेंटेन कर लिया, और इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने एडिशनल रिस्क ले रखा है, आपने बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर एक्सेसिव लोड दे रखा है जिसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ गया है, तो आप क्या करो, आप 8% का रिस्क मेंटेन करो जो गवर्नमेंट दे रखा है, प्लस 2-4% का और बफर मेंटेन कर दो. सो दीज आर बेसिकली सम एलिमेंट्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हम कैपिटल चार्जेस से बफर बना के वी आर ट्राइंग टू मिटिगेट आवर क्रेडिट रिस्क. Okay, very easy thing. We have already discussed credit charges earlier also, and capital charges earlier also. So this is just a kind of a recap over it. Okay. Now I'm moving to the last topic for this entire unit, and it's slightly technical in nature, but इसमें numerical नहीं आएगा. It is for your understanding purpose. Methods of measuring credit risk. Broadly हमारे पास दो methods हैं, and I'm very sure आपने Z score के बारे में जरूर सुना होगा, Altman Z score के बारे में जरूर सुना होगा. This is one of the variables which is used to measure bankruptcy. तो कल को किसी को रिसर्च करने का मन करे, for example, I research in the area of corporate bankruptcy. I'm currently working on one of the projects. So if I want to measure bankruptcy of any company, specifically bank or any other financial institution, इसको यूज किया जाता है, ठीक है. So if somebody asks you or if there's a question in the examination methods of credit risk, तो आप वहाँ पे ultimate Z score के बारे में बात कर सकते हैं. I'm going to give you a small glimpse of how it is calculated. तो यहाँ पे कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है. Z is equal to 1.2A, 1.4B, 3.3C, 0.6D, 1.0E. So basically क्या हुआ, weights assign किए हुए हैं. These are weights that are being assigned here. Okay, 1.2, 1.4. These are weights which are given to each of these parameters. And what are these parameters that has been mentioned below? For example, A represents what? A represents working capital divided by total asset. B represents retained earning divided by total assets. So basically these are some parameters जिसको हमने weights दिए, जैसे अभी हम initially credit scoring model बना रहे थे, ठीक है. Similarly we are trying to create a model here, and based on that there is going to be some value that is going to come up. Credit score की जैसे value आ रही थी कि 800 से ज्यादा हो सकती है, 300 से ज्यादा हो सकती है, ऐसे यहाँ पे Z स्कोर की वैल्यू आ जाएगी. एंड हियर आई हैव गिवन यू द इंटरप्रिटेशन कि ये जो भी वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्रेडिट रिस्क कितना है. फॉर एग्जांपल, इफ द Z स्कोर इज ग्रेटर देन 2.9, लेट्स से यहाँ पे जो कंप्यूट होकर वैल्यू आती है वो 2.9 से ज्यादा आती है, तो आप कह सकते हो कि आप सेफ जोन में हो, ठीक है. लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंकरप्सी, मतलब चांसेस बहुत कम है कि जो कंपनी है वो बैंकरप्ट होगी. स्कोर जो है वो लेस देन 1.23 है, ठीक है, वेरी समवेयर बिटवीन दिस, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 1.23 बट लेस देन 2.9, यू आर इन द ग्रे जोन. इंडिकेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मतलब चांसेस है कि कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ जाए. थर्ड है, इफ द Z स्कोर इज
लेस देन 1.23, अगर 1.23 से कम वैल्यू आती है, यू आर इन द डिस्ट्रेस जोन, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी। सो ये एक पैरामीटर बना लिया हमने, एक मेथड बना लिया जिसके बेस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कितना क्रेडिट रिस्क ज्यादा। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी का क्या मतलब है। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी का क्या मतलब है, क्रेडिट रिस्क कम है, और जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक्रप्सी होगा उतना ज्यादा क्रेडिट रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग क्रेडिट रिस्क। इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बट द मॉडल शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ये पैरामीटर्स याद कर लीजिएगा प्लीज, और ब्रॉडली इंटरप्रिटेशन तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, द सेकंड मॉडल इज एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिफॉल्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है उसकी एक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दिस अगेन इज अ काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू। एक विद इन टाइम फ्रेम, लेट से 1 साल का टाइम पीरियड ले लिया, ठीक है, एक टिपिकली 1 ईयर का टाइम पीरियड लेके एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो। वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू कि जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, जो भी हमने बॉन्ड यूज किए, जो भी हमने मार्केट इंडिकेटर्स यूज किए, एक परसेंटेज निकाल लेते हैं। लेट्स से आई कैलकुलेट अ परसेंटेज ऑफ 20%, कि 20% चांसेस हैं कि जितना भी मैंने लोन दे रखा है, ठीक है, उसमें से 20% प्रोबेबिलिटी है कि 20% लोग डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प मी आइडेंटिफाई दैट कितना मेरा डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, एंड अकॉर्डिंगली व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन। ठीक है, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू हेल्प मी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिस्क। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जो परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट निकल के आता है या एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी निकल के आती है वो 80% निकल के आती है, प्रोबेबिलिटी 80% है डिफॉल्ट होने की, तो उसका क्या मतलब है? Is the risk higher or is the risk lower? Yes, come on. If the probability Higher. value comes out to be 80%, it is going to be Higher. certainly high. भाई अगर मेरी प्रोबेबिलिटी हाई है डिफॉल्ट की, तो इसका मतलब रिस्क ज्यादा है, ज्यादा डिफॉल्ट करूंगा मैं। और अगर ईडीएफ की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है आई एम गोइंग टू डू लेस अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल which is created on various factors। अब factors क्या हो सकते हैं? financial performance हो सकती है, industry outlook हो सकता है, economic conditions हो सकती है, company specific factors हो सकते हैं। It can be any kind of factors, but based on that the probability is going to be derived। For your understanding you should be very clear कि हम मॉडल्स का इंटरप्रिटेशन हमें पता हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ लिख दो कि परसेंटेज ज्यादा है और दूसरी तरफ आप लिख दो कि डिफॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा है लेकिन क्रेडिट रिस्क कम। इंटरप्रिटेशन उल्टी मत कर देना बस, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। मेथड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड देन फाइनली समिंग अप, सो ब्रॉड आइडिया क्या है कि आप कितना भी रिस्क मैनेजमेंट अपना लो, कितना भी मिटिगेट कर लो, बट मोर देन प्लानिंग, more than strategy, it is actually the implementation that works and provides you the financial stability। अगर आप implement नहीं कर पाओगे, for example आप बना लेते हो कि capital charges मुझे 8% maintain करने हैं, but you're not able to actually implement it, you're not able to actually create buffers for you, all of that is going to get into vain, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। So ultimately more than credit risk strategy, it is actually about implementing of those credit risk strategies। Okay, So just one question here, are these scores and EDF values published for companies? Generally they do not। Okay. Generally they do not publish, but if according to some legal regulations, wherever the laws are applicable, for example, a lot of companies based on turnover, it is majorly based on turnovers, that for certain classes of companies when they exceed a certain turnover limit, let's say 500 crore or more, it is going to become mandatory to inform about all these values in their annual reports. Okay. For other companies it is not going to be. Okay. And second question I had was this credit ratings, AAA, AA plus, are there, These are any? published. Yeah, those are published, but from there, can one figure out, what, I mean, for a AAA company, what should be a EDF score or what should be a Z score for it to be classified as a AAA or a triple B or, those kind of things? Is there a So way what to happens? correlate them? That's a very good question. So what happens, Atulji, that when these companies, credit rating agencies, when they publish their AAA, right, it is mandatory for them that on their website they'll very clearly tell you about their methodology. For example, Okay. very recently I have used CRISIL. I'm very sure you must have heard about CRISIL. Yeah. Okay, one of the credit rating agencies. So Yeah. CRISIL recently has released ESG scores, which is Environment, Social and Governance score, which I'm using for one of my research projects. So before I use that index, it is very similar to the A rating only, right? It is very important for me to understand that how have they come out with that ESG score. So when I go to their website, there's a proper document out there where they spell out that, okay, this is the methodology that we have formulated. So very similarly,
if I have to talk about A plus, or if you want to evaluate, if you go on their website, you will be able to download that report, and in their report they would clearly specify what all parameters they have used. Okay. Okay. So yes, so that's all about this particular unit, and this ends your unit number 3. Unit number 4 is other kinds of risk, which is a very simpler unit. And the last unit is enterprise risk management, where whatever risk element we have discussed, we are going to take it on an enterprise. That how does an enterprise manages it? Right now, we are just discussing about the various kinds of risk. Okay, so that's all about today's lecture. I'll probably need 2 to 3 lectures. I'm going to request. I've requested last time also that this Monday there was a chance of 2 classes, but it got postponed. So I'll maximum need 3 lectures probably, and with that we'll be able to cover your syllabus. So I'm going to request them that probably in the next week we'll be given 2 lectures. All right. So that's all about today's lecture. Thank you for being a wonderful audience, and thank you for sharing all of these discussion. When we discuss a lot, we get to learn more. And please remember, the examples are very, very important. Whatever examples we are discussing, please make sure that these do not get restricted to only a class discussion. You should be able to write it in your exam. I'll feel wonderful if I get to know, or I don't know what is going to be the evaluation process and all, so on and so forth. But it would be great if you're able to actually implement it in your examination by writing answers. Otherwise, it's going to become futile. Okay. So that's all. Thank you. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night. Thank Sir. you. Sir, I have a question. Yeah, please. Sir, actually, this is my first class. This is the first time I'm attending the class of this subject. I wanted to know how many classes have happened till now. 6. 6. Yes. Okay, this was the 7th class. 6th. So this was the 6th class. Yes. Okay. So all the classes are available as recorded classes, or one some was of them are offline missing? class. Of course, that will not be available today. But other than that, the 5 Okay. classes are there. The good part about it is that I recall whatever we have studied in the last class in the first 10-15 minutes. You will find revision in every class. So even in the offline class, whatever was discussed has been repeated in the online class as well. So you can go through the recording, you can go through the PPTs which I shared on the group, and you can refer to the study material. You will be able to understand everything. And the PPTs you have shared with the students? Yeah, it's on the group there. So on the group of like WhatsApp group? Yeah, it's on the group, the students group, which is there, WhatsApp group. Okay. And sir, in case I have some doubts, can I please have your number if at all you're okay with it? Shrey, you can ask me in the next class. If you come by studying, आप पढ़ के आइए और class के बाद आप रुक जाइएगा, as we are having a discussion right now. After 9 PM, I can sit back and I can resolve your doubt. No problem out there. Okay, sir, that will be fine, sir. So all the classes are available on Teams, right, sir? Yeah, all the classes are there. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, chalo. Good night. All the best. Bye. Good night, sir. Good Bye-bye. night, sir. Bye.